our task. Uh, just a minute. Okay. So today our task is to perform both the virtual lab experiments. Okay, because only we have only 2 weeks left. Okay, and a lot of submission and assessment work is left. Okay, so we have to complete this. Okay, so it is my sincere request. Okay, so I've already mailed the extra class this week. Okay, so I've already checked your timetable. So this the B2 batch is free. Okay, the B2 batch is I think free on Tuesday, and both the batches are free on Tuesday actually. है ना? At 4:15. Okay, B2 and B3. Okay, so extra class will be conducted on that day. Okay, so basically the remaining things we can discuss there, and we will complete the submission and the assessment part on that day and during our regular practical class in this week. Because in the next week, okay, in the next week will be our last practical class, and we have to complete the entire certification process. Okay, so only I can say the uh, 2 weeks are there. Okay, so I'm again reminding this. What we'll do this Tuesday, at 4:15 extra practical class will be there. So remaining discussion, you have any doubt? Okay, and your submission part and assessment will be completed, and the remaining submission and assessment will be completed during the regular practical class in this week. Okay, and the next week uh, at 4:15, okay, the IA2 will be conducted. Fine. So we don't have any option that the extra class, the no option for the extra class in the uh, uh, next week, because IA2 will be there. Okay, since we are getting less time, because actually at the start I had planned that IA2 will be conducted during the practical class, but since only 2 weeks are left. Okay, so at 4:15 in the next to next week, IA2 will be conducted. So no option for the extra practical class, and in next to next week, the regular practical class will be our last practical class, and the entire certification process we have to complete on that day itself. Okay, so please complete your submission part and okay, as early as possible, so that the assessment can be completed. Okay, so you can come at any time whenever you are free, and you check my time slot also. If you have any doubt, then you can come in the HMT lab, and you can complete your calculation part and all in the that lab itself. Okay. Now the completion part is the most priority. Okay, so please complete it as early as possible. Okay, I've already given the deadline. Okay, so Monday for 12:30, you please submit all the pending experiments so that I can start the assessment part. And please be there in the extra practical class in this week at 4:15, and your regular practical class in the coming week and the next week. Fine. Okay, so now since we are not getting the sufficient times, that's why I'd called this extra practical class, so that we can complete this virtual lab experiments here. Okay, so anyways, a virtual lab experiment we can perform anywhere, and ultimately uh, it is always better that we perform this experiment in the any computer lab, or the other better option is I can conduct it online, and I can share my screen. Okay, so कॉलेज में भी ओके लैब में हम करते, तो मैं आप लोगों को ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद लैब में आई वाज गोइंग टू शेयर माय आई वाज गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन ओनली. ओके, सो एम एस टीम का लिंक है ना, आपको भेज करके आई प्लान दैट आई विल शेयर माय स्क्रीन, सो दैट है ना, वहां पर रहकर भी यू कैन सी माय स्क्रीन प्रॉपरली, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू सी द स्क्रीन. सो वही मैंने प्लान किया था. आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट इन द लैब, and then I will send the MS Team link, and then I will share the screen
है ना, जैसा हमारा ऑनलाइन लेक्चर रहता है, एंड देन यू कैन सी द स्क्रीन हाउ टू परफॉर्म इट. Okay, so in this way we can complete the virtual lab experiments. Okay. Okay, just give me a minute. Okay, so that we will start both the okay, so we will discuss the both the virtual lab experiments. Uh, okay. Now just give me a minute so that I will share the screen, and be with me, and please listen whatever I am discussing here. Okay, so you will not face any issue while performing this virtual lab experiment. Things are not difficult. The things are very simple. Right? Okay, so I'm going to share the screen. Fine. So I've already sent the list of experiments. Okay, so how many of you are from B2 batch? B2 batch से कौन है? सर मैं ही हूँ. अच्छा अच्छा, आप ही हैं. अच्छा, एंड B3 बैच से आकाश एंड. हाँ सर. अच्छा, आप लोग B3 से हैं. अच्छा, तो देखो B2 का स्टेटस तो ये है कि B2 में हमने ऑल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर लिए हैं. जस्ट लास्ट वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट इज लेफ्ट. ओके, यस नारायण, ओके. है ना? हाँ, यू आर एब्सेंट ऑन दैट डे. एक्चुअली हमने, हाँ हमने उस दिन लास्ट प्रैक्टिकल क्लास में 8th एक्सपेरिमेंट ड्रॉप वाइज एंड फिल्म वाइज वाला भी परफॉर्म कर लिया था, और वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर लिया था, है ना? ये अपना virtual lab experiment on natural convection. Fine. Is Narayan, am I audible? यस सर, यस सर. है ना? तो हाँ, तो आपका B2 बैच का स्टेटस ये है कि हमने देखो अपना टारगेट क्या है. अवर टारगेट इज वी हैव टू परफॉर्म 10 एक्सपेरिमेंट्स, 8 लैब एक्सपेरिमेंट दैट है ना, we have to perform physically in the lab, and 2 virtual lab experiments. तो B2 बैच का स्टेटस है कि we have performed all the 8 lab experiments and 1 virtual lab experiment. तो केवल सेकंड वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट उसमें बचा है, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. फाइन. एंड ओके. B3 बैच का स्टेटस है कि वी हैव परफॉर्म्ड ऑल द 8 लैब एक्सपेरिमेंट्स, बट थोड़ा सा वो 7th एक्सपेरिमेंट मास ट्रांसफर एंड 8th एक्सपेरिमेंट दैट इज ड्रॉप वाइज एंड फिल्म वाइज, उसका थोड़ा कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे एक बार. ओके, सो आप लोग में भी बीच में या तो यू कम ऑन मंडे और ट्यूसडे एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्लास जो 4:15 पर, उसमें आप लोग आ जाइए. सो इट विल टेक अराउंड 15 to 20 minutes. Okay, so I will explain. Demonstration is already over. Okay, and you have performed at both the experiment mass transfer and drop wise and film wise. Since due to Prakalp, I was not there in the last practical class for B3 batch. Okay, so but demonstration is already over, and you have performed at both the experiments. The only thing is just calculation is left, so I will explain that calculation. So it will take around 15 to 20 minutes. ठीक है, तो आप लोग ट्यूसडे आ जाना एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्लास में जब आप रहेंगे. So at 4:15 the class is there, so I will explain this within 15 to 20 minutes. ठीक है आकाश? हाँ सर.
ओके। अच्छा, और दूसरा B3 बैच का दोनों ही वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट बचे हैं। ये वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऑन नेचुरल कन्वेक्शन एंड वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऑन स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। तो अब क्या एक काम करते हैं, अभी हम लोग दोनों वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, तो फिर B2 B3 बैच दोनों का वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट फिनिश हो जाएंगे, है ना आपका, है ना आपका रिवाइज हो जाएगा नारायण, है ना। एंड बाकी कोई भी रहता तो है ना B2 बैच का रिवाइज हो जाता, और अपना क्या दोनों वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हमारे ऑल 10 एक्सपेरिमेंट्स फिनिश हो जाएंगे फॉर बोथ द बैचेस B2 एंड B3। केवल आपका B3 बैच का एक्सपेरिमेंट 7 मास ट्रांसफर और एक्सपेरिमेंट 8 ड्रॉप वाइज एंड फिल्म वाइज कंडेंसेशन, इसका कैलकुलेशन का थोड़ा डिस्कशन रह गया है। दैट आई विल टेक ऑन ट्यूसडे, दैट इज 18th April at 4:15 p.m. at the time of our extra practical class. So everything will be over, all the 10 experiments for both the batches B2 and B3. Is it okay? Hello? Yes, sir. Okay, okay, fine. Okay, so I'm going to share the screen, and I've already told you the common instruction, if my voice is not clearly audible and if the screen is not clearly visible, okay, so please unmute yourself and please inform me immediately so that the corrective measure can be taken. Okay, so I've shared the screen. Yes, can you see my screen properly? The list of experiment? थोड़ा आप लोग कंफर्म करते जाइए, सो है ना, सो आई कैन अंडरस्टैंड यू आर गेटिंग प्रॉपर ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। हेलो? हाँ हेलो? सर। हाँ सर, दिख रहा। ओके, दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। ओके, सो हमने ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भेजा था। ओके, सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना, ऑफ दिस लैब एक्सपेरिमेंट। सो एनी 8 experiments we have to perform from the list. So we have already performed 8 experiments from this lab experiment list, and this is a list of virtual lab experiment. So from this list of virtual lab experiment, we have to perform two virtual lab experiment. Okay, so from this list of virtual lab experiment, we will perform this heat transfer by the natural convection, and this the black body radiation, that is determination of Stephen's constant. Fine. Now you just see here, I've given the link to access these virtual lab experiments. Okay, so one way to perform the experiment is you just click on this link. Okay, so you will be able to access any virtual lab experiment. Okay, and another way is you just go to the Google. You just go to the Google. Just give me a minute. You just go to the Google and you just type. Uh, you just type virtual lab experiments heat transfer. Okay, natural convection. Fine. So it will open this page. Now you click on this heat transfer by the natural convection. Okay, so the page will open. Okay, this will open this page. Okay, so you can see the 7 tabs are there. Tab 1 theory tab, tab 2 procedure tab 3 is the self evaluation tab 4 is the simulator tab, and tab 5 assignment tab 6 is the reference tab, and tab 7 is the feedback tab. Okay, now uh, you just see, first of all I will talk about the tabs. Okay, now the second task is I will show the template. I've already sent the template for completing this experiment. Okay, I've already sent the template for completing both the virtual lab experiment. Okay, this I've already sent. Okay, so this is the template. This is a template for completing this heat transfer by natural convection, this experiment. Okay,
This is a template. Okay, so now I will tell you how to complete this template, how to complete the write-up of this experiment. Okay, and this is a template for completing the last experiment. That is the virtual lab experiment on Stefan Boltzmann constant. Okay, so we'll talk about this later. Since we are, first of all, we'll perform this natural heat transfer by the natural convection. Fine. So just see this. So remember, only three tabs are useful for completing this experiment. Tab number one, that is a theory tab. In this tab, you will get the entire theory related to this experiment, the details of the apparatus, okay, the details and the construction of this apparatus, okay, how it is working. Now the theory related to this natural convection, okay, and the applications. So all the theory related to this concept and all the theory related to this experiment is available in the theory tab. Okay, so what to do first? Okay, so for completing this write-up, okay, I will explain this afterwards. Okay, first of all, I will tell you how to complete this. Uh, how to complete the write-up of this experiment. Okay, so you just see this. So क्या करना है, theory tab में आपको यहाँ पे you just copy all the details right from aim to the last. That is this application part. You just okay, you just copy all the details of this theory tab and you just go to this word file template of this experiment, और ये जहां पर मैंने virtual lab details लिखा है यहाँ पर पूरा डिटेल आप पेस्ट कर दीजिए. Okay, you paste all the detail mentioned in the theory tab. Fine, ये पूरा पेस्ट कर दे. सर एक बार वापस बता सकते हैं क्या? एक बार थोड़ा ये हैंग हो गया था मेरा कंप्यूटर। अच्छा, मैंने ये बोला कि देखो ये जो थेरी टैब है, ओके, ये थेरी टैब ऑलरेडी इनेबल्ड है. फाइन, अभी देखो ये सेकंड टैब मैंने क्लिक किया है, प्रोसीजर टैब है, तो क्या रहता है स्टार्टिंग से थेरी टैब ऑटोमेटिकली माने बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहता है. Okay, so in the theory tab, you can see the aim, the apparatus, and the construction of the setup. The theory related to this concept and the theory related to this experiment is available, and the applications is available. Okay, so I will explain all these things later. Now, first of all, I am telling you how to complete the write-up of this experiment. तो क्या करेंगे आप, यहाँ से पूरा डिटेल जो है पूरा सेलेक्ट कर लो, right from aim to the last. That is up to the application. ये पूरा सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर लो, एंड देन ये जो अपना वर्ड फाइल टेम्पलेट है इस एक्सपेरिमेंट का, यहाँ पे जो ओके, हियर द वर्चुअल लैब डिटेल इज मेंशन्ड, सो हियर यू पेस्ट ऑल द डिटेल्स मेंशन्ड इन द थ्योरी टैब. ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देना उसे. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे प्रोसीजर टैब में. प्रोसीजर टैब में यू जस्ट क्लिक ऑन प्रोसीजर टैब. So here you will get all the steps okay, for performing this experiment. So read each and every step and just follow it. So you will be able to perform this virtual lab experiment very comfortably. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्या क्या है वो. अब आप यहाँ पे क्या करो, प्रोसीजर टैब आया, so ये यहाँ से कॉपी करो पूरा डिटेल right from the start, that is performing the simulation up to the last, that is up to the result. ये पूरा सेलेक्ट करके इसे कॉपी करो, और उसके बाद वर्ड फाइल टेम्पलेट में जा करके यहाँ वर्चुअल लैब डिटेल्स में जो आपने थ्योरी टैब के डिटेल्स कॉपी करके पेस्ट किए थे, उसके नीचे यू पेस्ट ऑल द डिटेल्स मेंशन्ड इन द प्रोसीजर टैब. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ आफ्टर दिस you just see this, the third tab is self evaluation tab. When you will click on this self evaluation tab, so you will get the MCQs, multiple choice questions. Okay, so you can solve those multiple choice question for enhancing your knowledge, for testing your knowledge, but it is not the part of submission. Okay, now the fourth tab, that is the most important tab, that is the simulator for making the simulation. Okay, अब इसमें क्या करो आप, you just click here. So you will be able to open this window in the full screen. Okay, now you just see this. This is the setup. ओके, अभी सेटअप में क्या करो आप, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सब डिटेल्स दिया हुआ है, सेटअप का कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है, सब कुछ दिख रहा है. हियर व्हाट इज दिस, डक्ट इज देयर व्हिच इज ओपन एट द टॉप एंड एट द बॉटम, एंड वी हैव फिटेड दिस
disc in the vertical fashion. We have placed four thermocouple at four different location along the length of the rod, and two thermocouple for measuring the air temperature inside this chamber. White knob for adjusting the voltage value. Okay, so that voltage value we can read with the help of this voltmeter, and we can note down the corresponding current value with the help of this ammeter. Okay, main switch, stopwatch for recording the time, temperature indicator for recording the temperature value at the different places where we have placed thermocouples. Okay, this is a drop down list. From this drop down list, we can select the material, different material. यहाँ पे by just sliding the slider, so we can change the values of the width of this wooden box. Wooden box ये है आपका, है ना, ये जो enclosure है, इसका material wood है, इसलिए हमने इसको wooden box कह रहे हैं. तो इसका width, इसका height, okay. And the cylinder, this is a tube, so it is like a cylinder. So diameter of the cylinder, length of the cylinder, thickness of the cylinder, that value we can give the input value to both the parameters. Okay, when we'll click on this power on, so we will be able to start the simulation. ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट प्रोसीजर बताया, अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अभी वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म दिस, है ना. सो आप क्या करो, इसके बाद क्लिक करो, इसके बाद पहले तो हमने फुल स्क्रीन में से ओपन किया, उसके बाद ये क्लिक करो शो क्रॉस सेक्शन, so you will be able to visualize the internal structure. Fine, you see this, you just see this. Now we can easily visualize the internal structure. देखो यहाँ दिख रहा है ना कि we have placed where we have placed the thermocouples, where we have placed the heater. Okay, everything we can visualize. Okay, now without performing this experiment, you just take the screenshot. Okay, without performing the experiment, you just take the screenshot, copy that screenshot, and इसके बाद you just paste it here in the word file template. ठीक है, यहाँ पर word file template में आप उसे paste कर दो. क्या किया हमने, इसको फुल स्क्रीन में ओपन किया, and then without performing the experiment, okay, without making the simulation, you just take the screenshot, copy that screenshot, and paste it here in our word file template below the details of procedure tab. ठीक है, तो ये हमने ये जो स्क्रीनशॉट होगा, what does this indicate? This screenshot will show the setup diagram of this experiment. ठीक है, तो आपका ये जो वर्चुअल लैब डिटेल्स है, इसमें सबसे पहले आ जाएंगे all the details of theory tab. Okay, now all the details of tab number 2, that is procedure tab, and all the details of tab number all, not all the details, just one screenshot of this setup of this experiment. Okay, from the simulator tab, that is for simulator tab, that is the tab number 4. तो वो क्या शो करेगा, सेटअप डायग्राम शो करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्चुअल लैब डिटेल्स कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद देखो एनालिसिस है. अभी एनालिसिस में मैंने आपको 2 केसेस दिए हैं. केस नंबर 1 इज फॉर द सेम वोल्टेज वैल्यू यू हैव टू मेक द सिमुलेशन फॉर डिफरेंट मटेरियल कीपिंग द इनपुट वैल्यूज एज कांस्टेंट. तो देखो इसमें अपने को क्या करना है, वी हैव टू कीप द सेम वोल्टेज वैल्यू. सपोज मैंने 100 वोल्ट रखा, ठीक है, एंड वी हैव 5 मटेरियल, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो मैंने दिखाया. सो वी विल चेंज द मटेरियल, वी विल टेक वन मटेरियल एट अ टाइम. ओके, और इनपुट वैल्यू मैंने जो भी लिया है, वुडन बॉक्स का हाइट, विड्थ, diameter of the cylinder, length of the cylinder, thickness of the cylinder. Okay, so whatever value I have taken, the same values I will take for all the material. That means I will keep my voltage value as same, and I will keep my all the input values as same. I will change only material, I will take one material at a time. ठीक है, so I have to start the simulation, and after the simulation I have to take the screenshot, copy that screenshot, and paste it here in word file template. So देखो 5 मटेरियल है, तो यहाँ पर आपको 5 सिमुलेशन करने पड़ेंगे, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी सिमुलेशन यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, कॉपी दैट स्क्रीनशॉट, एंड पेस्ट इट हियर. ठीक है, तो यहाँ पर आपके 5 स्क्रीनशॉट आ जाएंगे. नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करना है, फॉर द सेम वोल्टेज यू हैव टू मेक द सिमुलेशन फॉर डिफरेंट मटेरियल फॉर विद डिफरेंट इनपुट वैल्यूज. यानी इसमें क्या करना है, सभी ऑल 5 केसेस के लिए आपको यू हैव टू कीप द सेम वोल्टेज वैल्यू, but you have to take the different material at a time with the different input value. That means here I have to change the input values, and I have to change the material also. Fine. तो यहाँ यहाँ पर वोल्टेज वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम मटेरियल भी चेंज करेंगे और इनपुट वैल्यू भी चेंज करेंगे.
पहले केस में क्या था, वोल्टेज वैल्यू भी सेम है और इनपुट वैल्यू भी सेम है, जस्ट हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं। सेकंड केस में क्या है, voltage only the voltage value is same but we have to take the different material and we have to take the different input values. तो यहाँ भी five cases will be there, so we'll make five simulation and after the so we'll make five simulation and after the completion of each and every simulation we have to take the screenshot, copy that screenshot and paste it here. So five simulation for case one and five simulation for case two. So five screenshot for five case one and five screenshot for case two. Okay. Now what I can say, I can give you the third case also. Okay, I can give different other cases also. Maybe case number three can be you take the different voltage value, take different material, but the input value is same. This is case number three. And the case number four can be you take the different voltage value, you take the different material and the different input values. So we can make the analysis for four cases actually. But in order to minimize your work, I've given only two cases. Okay, so you have to make the analysis only for the two cases. Fine. अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन आप कैसे क्या दिखाओगे? Now here you have to show the calculation after the simulation. On the bottom right corner, the here our aim for performing this experiment is to calculate convective heat transfer coefficient, that is H, and the Nusselt number. Fine. So after the completion of the simulation, the simulated result will be displayed on the bottom right corner. Okay, so this will be the simulated result for H and Nusselt number. Now we will calculate this H, that is convective heat transfer coefficient, and the Nusselt number analytically. That calculation you have to show here. Okay, and then you have to show the comparison of this analytical value of H and Nusselt number with the simulated value, whether you are getting the comparable results or not. Okay, so you show at least two sample calculation here in the calculation part, and in the result you write uh, what value you got for this. Okay, so in fact you can make you have to write the result. So in fact you can create the table. Okay, for case number one, you just make the table for H Nusselt number. Okay, for the simulated value, and H and the Nusselt number for the analytical value for the all the five cases. So you can show your result in the tabulated form. And finally, you write the conclusion, meaningful conclusion at the last. Fine. After comparing the convectivity transfer coefficient and Nusselt number value, that is you have to compare the analytical value with the simulated value. Okay, are you getting or not? After comparing your analytical value of Nusselt number and convectivity transfer coefficient with the simulated value of convectivity transfer coefficient Nusselt number, you have to write the meaningful conclusion at the last. ठीक है, तो आप लोग रिजल्ट यहाँ पर टेबुलेटेड फॉर्म में शो कर सकते हो। यहाँ पर लिखो सिमुलेटेड रिजल्ट, यहाँ पे लिखो एनालिटिकल रिजल्ट, यहाँ पे एच और नसल नंबर, एच और नसल नंबर। सो क्या है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि सिमुलेटेड वैल्यूज और एनालिटिकल वैल्यू में एच का कंपैरिजन एंड सिमुलेटेड और एनालिटिकल में असल नंबर का कंपैरिजन फॉर ऑल द फाइव केसेस, है ना। केस वन केस टू के लिए आप ऐसे टेबुलेटेड फॉर्म में कर सकते हैं। Okay, this is just my suggestion, and in fact, in other way also, if you want to show the result, then also you can present. But the tabulated form is the best way to present the result. Okay. Now you got how to complete the write up. Yes, anyone please confirm. Yes, sir. Okay, सर fine. वो एनालिटिकली कैसे करना है? एनालिटिकली क्या है, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। एक्चुअली क्या सर ये Q is equal, हाँ सर ये ऑनलाइन सबमिट करना है? नहीं नहीं, हार्ड कॉपी में ही सबमिट करो, जैसे रेगुलर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। अच्छा, तो जो कैलकुलेशन है वो रिटर्न होना चाहिए और बाकी वो जो फोटोज चिपकाना है वो पहले मतलब फोटोज चिपका के उसका प्रिंट लेना है, तब उसका कैलकुलेशन रिटर्न। यस यस, करेक्ट, ओके है ना। और डोंट वेस्ट पेजेस, so you can take print out on both the side. ओके, एंड ओके सर। थोड़ा देख लेना कि जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह आए तो वो थोड़ा विजिबल रहे। इनफैक्ट यू कैन टेक टू स्क्रीनशॉट्स ऑन द सेम पेज। ओके, बस थोड़ा विजिबिलिटी चेक कर लेना कि ऐसा टू आने से या थ्री आने से
कहीं ऐसा नहीं रहना चाहिए कि वो विजिबल ही ना रहे प्रॉपरली. इफ इट इज विजिबल, then you can take maybe 2 to 3 screenshot on the same page. Is it okay? यस सर. ओके हाँ, तो इसीलिए मैंने वर्ड फाइल टेम्पलेट दिया है. इसी में आप पूरा सब सेट करके स्क्रीनशॉट्स को कॉपी पेस्ट करके सब डिटेल्स कंप्लीट करके कैलकुलेशन है ना, टाइप भी कर सकते हो आप. और लेकिन ज्यादा बेटर है कि प्रिंट निकालने के बाद आप इसमें है ना यू कैन राइट इट, है ना. सो वो इजी जाएगा आपको. एंड यू कैन राइट द रिजल्ट, है ना. टेबल ये सब मैनुअली भी कर सकते हैं और आप टाइप वे में भी कर सकते हैं. कंक्लूजन भी मे बी मैनुअली भी कर सकते हैं, टाइप फॉर्म भी कर सकते हैं. लेकिन माय सजेशन इज कैलकुलेशन, रिजल्ट और कंक्लूजन आप लोग उतना स्पेस क्रिएट करके यू टेक द प्रिंट एंड देन यू मैनुअली कंप्लीट करेंगे तो वो आपको इजी जाएगा, है ना. चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कैसे परफॉर्म करेंगे. ओके, तो लेट्स सी. चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट. हाँ यस, आकाश आप पूछ रहे थे हाउ टू कम कैलकुलेट इट एनालिटिकली, है ना. हाँ सर. हाँ वो मैं भी बताऊंगा. एनालिटिकली क्या है, देखो क्यू नेचुरल कन्वेक्शन है, सो वी विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सो क्यू इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी. तो उस एक्सप्रेशन से वी विल फाइंड एच. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एच एनालिटिकली. एंड नसल नंबर इज इक्वल टू एच एल बाय के. सो वो जो फॉर्मूला है उससे हम कैलकुलेट करेंगे नसल नंबर. सो इस तरीके से हम नसल नंबर एनालिटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम अच्छा सर, देखेंगे तो भी दो ही कैसे. स्टेप है. हाँ 2 ही स्टेप है. हाँ, 2 ही स्टेप है, सिंपल है. और एंड दूसरा मैं आपको ये भी वे बताऊंगा कि आपको इनफैक्ट वो कैलकुलेट भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोविजन इज देयर. यू जस्ट फीड, देयर इज वन टेबल. ये देखो प्रोसीजर में है. प्रोसीजर में इधर इधर सिमुलेशन में, यहाँ आप सिमुलेशन में जाओगे ना, तो इधर ये देखो. इधर ये सिमुलेशन में जाने के बाद ये देखो इधर नीचे टेबल दिया हुआ है. तो वट एवर यू विल डू एनालिटिकली, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे जस्ट एक टेबल है एल्यूमिनियम के लिए. वोल्टेज का वैल्यू, यू फीड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यू फीड द वैल्यू ऑफ करंट, करस्पॉन्डिंग करंट वैल्यू. जो भी आपने इनपुट वैल्यू लिया था, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, यू फीड द वैल्यू हियर. ऑटोमेटिकली वो एरिया कैलकुलेट कर देगा. अभी देखो टेम्परेचर इंडिकेटर से यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे T2 T3 T4 T5 जो सरफेस ऑफ ट्यूब में है. वो टेम्परेचर वैल्यू आप यहाँ पर फीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एवरेज वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा. यू पुट द वैल्यू यहाँ से टेम्परेचर इंडिकेटर से T1 और T6 जो एम्बियंट टेम्परेचर है T1 और T6, ये वैल्यू आप यहाँ टेबल में फीड करेंगे तो यहाँ पर वो मीन वैल्यू कैलकुलेट कर देगा और ऑटोमेटिकली आपका एनालिटिकल वैल्यू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का आ जाएगा और नसेल्ट नंबर का आ जाएगा. आर यू गेटिंग और नॉट? हाँ सर. और सर कंपेयर किससे करना है? प्रैक्टिकल. कंपेयर करना है आपको सिमुलेटेड रिजल्ट. मैं भी बताऊंगा जैसे हम सिमुलेशन करेंगे ना. देखो अभी हमने परफॉर्म नहीं किया तो यहाँ पे 0 0 वैल्यू दिख रही है, दिख रहा है कर्सर मेरा, हाँ सर. है ना. जब हम इसको ऑन कर, जब हम सिमुलेशन हो जाएगा तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिमुलेशन इट विल जनरेट, इट विल डिस्प्ले द सिमुलेटेड वैल्यू ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड नसेल्ट नंबर. सो ये सिमुलेटेड रिजल्ट्स हैं. ओके, सो इसके साथ आपको कंपैरिजन करना है तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा. ठीक है, तो आपका मैंने आपको बताया कि एनालिटिकली कैसे. तो आप देखो, आप यू नो हाउ टू मेक द कैलकुलेशन एनालिटिकली सैंपल. तो यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप जस्ट फीड करेंगे वैल्यू तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा. लेकिन यहाँ पे टेम्पलेट में आप वो जस्ट शो कर देना वन और टू सैंपल कैलकुलेशन. Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी. ओके, एंड नसल नंबर इज इक्वल टू एच एल बाय के. टू सैंपल कैलकुलेशन यू जस्ट शो हियर. ठीक है, चलिए अभी हम है ना वन बाय पूरा देख लेते हैं क्या थ्योरी है एंड प्रोसीजर और उसके बाद सिमुलेशन कैसे करना, सो दैट वी विल बी एबल टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, सो लेट्स गो टू द ओके ओके. हाँ, थोड़ी सी बात ये और रह गई थी. मैंने आप लोगों को टैब के बारे में बताया था. तो यू जस्ट रिमेंबर ओनली 3 टैब्स आर इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. टैब नंबर 1 थ्योरी टैब, टैब नंबर 2 प्रोसीजर टैब एंड टैब नंबर 4 सिमुलेटर टैब. ओके, self evaluation tab mein when you will go, it will display MCQ, so you can solve those MCQs for testing your knowledge, for enhancing your knowledge, but it is not the part of submission. And when you will click on assignment tab, so it will show the assignment questions, so you can solve those assignment questions for enhancing your knowledge, but it is also not the part of submission. ठीक है. एंड रेफरेंस टैब में क्या है, द डिटेल्स आर मेंशन्ड, है ना, द रेफरेंस डिटेल्स आर मेंशन्ड फॉर प्रिपेयरिंग दिस वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट, सो आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ सबमिशन. हाँ, जब आप ये वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे देन यू गिव द फीडबैक. ठीक है, जिसमें फीडबैक आप जरूर दे देना.
तो फीडबैक के लिए क्या करेगा, इट विल आस्क फॉर लॉग इन. In fact, it may ask to log in for the simulator also. Okay, so if you have never visited this virtual lab website, so first of all, you just register on this virtual lab website. Okay, so after the successful registration, you will get one username and password. So with that username and password, you can log in to this virtual lab website and you can access any virtual lab experiment. ठीक है, तो आप लोग ये फीडबैक जरूर दे देना वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, परफॉर्म करने के बाद, बिकॉज दे आस्क दिस. सर ओके, फीडबैक को पेस्ट करना है क्या इस पे? नहीं 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 नहीं, फीड पेस्ट नहीं करना है. ओके ओके. हाँ, पेस्ट नहीं करना है, जस्ट आप दे देना, क्योंकि दे आस्क दिस टू गिव द फीडबैक आफ्टर परफॉर्मिंग दिस. ओके, यूनिवर्सिटी पर्सन आस्क दिस, है ना, कि यू कन्वे द मैसेज टू द स्टूडेंट, सो कि आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट यू जस्ट गिव द फीडबैक, है ना. तो आप लोग फीडबैक प्लीज दे दीजिएगा, है ना, कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं है. ओके, चलिए अभी हम आते हैं दैट. ओके, अभी यहाँ पर ये देखिए आप, व्हाट इज द एम फॉर परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, सो द एम फॉर परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट मेक द करेक्शन. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. इट इज नॉट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज denoted by capital U. Okay, we are not going to calculate overall heat transfer coefficient. We have to calculate convective heat transfer coefficient, that is small h. Okay, so this is a correction. So we have to determine the convective heat transfer coefficient, that is small h, at the surface of a given vertical metal cylinder. Okay, this is a given vertical metal cylinder. Fine. By the natural convection method. Okay, so here natural convection is going on, so we have to calculate the convective heat transfer coefficient from the surface of this vertical metal cylinder. Okay, now the second is we have to calculate the Nusselt number. Fine. अच्छा, आप लोग okay, whenever when you will come to our HMT lab, okay, so I will show you the setup, the physical setup that is kept in our lab. Okay, so the similar setup is kept in our lab for this natural convection. Okay, ऐसा ही setup है. उसमें क्या है? Now we will talk about the apparatus. Okay, so the same as apparatus is there. The only difference is here we have placed 4 thermocouple at the 4 different location along the length of this vertical cylinder. Okay, T2, T3, T4, T5, and we have taken 2 thermocouple for measuring ambient temperature. That is the air temperature inside this chamber or box. That is T1 and T6. Okay, in our setup that is kept in our lab, the only difference is we have placed 6 thermocouple at the 6 different location along the length of this vertical metal cylinder. Okay, and we have placed only one thermocouple for measuring the ambient temperature. Okay, so this is the only difference, and the rest of the part is exactly same. ठीक है, तो यही एक difference है. In our lab setup, we have taken 6 thermocouple at the 6 different location along the length of this vertical cylinder and 1 thermocouple for measuring ambient temperature. And here we have placed 4 thermocouple at the 4 different location along the length of this vertical metal cylinder, that is T2, T3, T4, T5, and 2 thermocouple T1 and T6 for measuring the ambient temperature, that is the temperature of the air inside this chamber. Okay, now let's discuss about this constructional detail. Actually, this setup is designed and fabricated in order to study the natural convection phenomena in terms of the variation of the local convective heat transfer coefficient along the length of this vertical cylinder. And then we can calculate the average value of convective heat transfer coefficient, that we can calculate with the help of Newton's law of cooling, and then we can calculate the average value of convective heat transfer coefficient from the correlation. Okay, and then we will compare our average value of convective heat transfer coefficient that we got from the correlation with the average value of convective heat transfer coefficient that we have calculated with the help of Newton's law of cooling. Okay, so what do you mean by correlation? If I'm saying correlation, so it is a natural convection. So in the natural convection, Nusselt number is the function of Grashof number and the Prandtl number. Okay, so that is the correlation is there. Okay, for the natural convection, Nusselt number is the function of Grashof number and the Prandtl number.
So the exact correlation we have. So from that correlation, we can find the Nusselt number, and after getting Nusselt number is equal to HL by K. From that, we can calculate H. So that H will be the average value of convective heat transfer coefficient. Okay, and the local value. So in this way, we can calculate the average value of convective heat transfer coefficient from this correlation, and we can calculate the average value of convective heat transfer coefficient uh, from the Newton's law of cooling, and then we can compare our average value of convective heat transfer coefficient and the local value of convective heat transfer coefficient. We can calculate at the location where we have placed the thermocouples. Okay, that means I can calculate the local value of convective heat transfer coefficient at T2, at T3, at T4, at T5. That means I can calculate the local value of convective heat transfer coefficient at the location where I have placed the thermocouple. So I can this setup is designed and fabricated in order to understand the natural convection phenomena in terms of the variation of the local convective heat transfer coefficient along the length of this vertical cylinder, and then we can find the average value of convective heat transfer coefficient, and then we can compare our average value of convective heat transfer coefficient from the correlation value with the Newton's with the average value of one local convective average value of the convective heat transfer coefficient with the Newton's law of cooling. Okay, so that is the okay, that study we can do. But here in the virtual lab experiment, our task is simple. No need to calculate the local value of convective heat transfer coefficient. Generally, we will just calculate the convective heat transfer coefficient. Okay, by applying the Newton's law of cooling, that will be the average value of convective heat transfer coefficient, and then with the help of that average value of convective heat transfer coefficient, we will calculate the Nusselt number. So ultimately we will just calculate the H, that is the convective heat transfer coefficient, Nusselt number analytically, and here and we will perform this simulation. So we'll just compare the value of H and Nusselt number, okay, analytical values with the simulated values. Okay, so okay, so very simple, we will just make the simulation. Okay, so we will be able to, so we'll get the simulated values of H and Nusselt number, and then we will calculate the analytical, we will calculate this H and Nusselt number analytically, and then we will compare the values of H and Nusselt number. That means we'll compare our analytical value of H and Nusselt number with the simulated values. ठीक है, H और Nusselt number का analytical value का हम comparison करेंगे simulated value के साथ. Just इतना ही करना है, ठीक है? Understood? Whatever I have discussed so far. Anyone please confirm? Yes, sir. Okay. Okay, so let's go ahead. Abhi dekho. In this virtual lab experiment, we have the flexibility. Okay, so a lot of okay, so we can make we can see that we can make the analysis for the different cases, because in our lab setup, the only provision is we can change the voltage value. That's it. I can't change I can't change the material of this chamber. I can't change the dimension of this chamber. I can't change the material of this vertical cylinder. I can't change the dimension of this vertical cylinder. The only thing is I can change the heat input value by changing the voltage value. Fine. But here we have the provision. We can change the voltage value. That means we can change the heat input value. But at the same time, I can change the material of this enclosure. I can change the dimension of this enclosure. I can change the material of this vertical cylinder. I can change the dimension of this vertical cylinder. Okay, so we have okay, so a lot of flexibility. We can make the analysis for the different cases. So let's see the construction of this setup. Okay, you just see what is this? This is a rectangular tube. Okay, so it is like a duct. So we have taken a duct which is open at the bottom and at the top. Okay, and we have placed a metal cylinder. Okay, and we have fitted this metal cylinder in the vertical fashion inside this duct. Okay, very simple. What we have done, we have taken this rectangular tube. So rectangular tube, that means we have taken a duct which is open at the bottom and at the top. Now we have fitted um, a metal cylinder vertically inside this duct.
Okay, we have placed the heater along the length of this vertical cylinder. We have placed 4 thermocouple at the 4 different location along the length of this vertical cylinder, that is T2, T3, T4, T5. And we have placed 2 thermocouple, that is T1 and T6, for measuring the ambient temperature, that is the air temperature inside this duct. Fine. Now what we will do, we will provide the power supply to the apparatus. We will on the heater. So heater will heat the surface of this vertical cylinder. So the heat transfer takes place by the natural convection from the surface of this vertical cylinder to the air that is available inside this duct. Okay, so we have to record the temperature value at the 6 different location. That is 4 on the metal cylinder and 2 for measuring the ambient temperature every after 15 minutes, again and again, till the steady state is reached. And after achieving a steady state, we have to use the steady state temperature values for making calculation. Okay, so you just see here, this is a duct which is open at the bottom and at the top. So the air is available inside this duct. Okay, since we are not using any external agency, so normal airflow is there inside the duct. That's why it is natural convection. If we want to make the setup to act as the forced convection, so we have to place some external agency like fan or blower, so the air will flow inside the duct with some considerable velocity. Then the same setup can be converted into the forced convection. Fine. Okay, someone has joined, I think. Okay. Okay. Now, fine. Okay, so uh, the air is flowing with the naturally. सर Okay, we, सर हाँ सर हाँ, थोड़ा पीछे का रिपीट कर सकते हैं कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ये अच्छा अच्छा, कहाँ तक आपने सुना था? सर मतलब नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ ग्राशॉफ नंबर एंड प्रांडल नंबर अच्छा अच्छा, okay. So uh, okay, so Nusselt number is the देखो Nusselt number, we can calculate the average value of convective heat transfer coefficient by applying the Newton's law of cooling. Okay, Q is equal to HA delta T, where H is the average value of convective heat transfer coefficient. And how can we calculate the average value of convective heat transfer coefficient with the help of correlation? Since it is a natural convection, so for the natural convection, Nusselt number is the function of Grashof number and Prandtl's number. Okay, so with that correlation, I can calculate Nusselt number. And if I'm getting Nusselt number, so Nusselt number is equal to HL by K. So from that, I can calculate H. So this is how I can calculate the average value of convective heat transfer coefficient with the help of correlation. Okay, so I can find the average value of convective heat transfer coefficient from the correlation as well as from the Newton's law of cooling, and then we will compare our average value of convective heat transfer coefficient. And local value of convective heat transfer coefficient we can calculate at the location we have where we have placed the thermocouples. And remember, after calculating the local value of convective heat transfer coefficient, we have to see the variation of local convective heat transfer coefficient along the length of the rod. So definitely, as the length of the rod increases, the local value of convective heat transfer coefficient decreases. Okay, so this is the provision in this setup. We can make the analysis like this. But in the virtual lab experiment, our work is very simple. We no need to find the local value of convective heat transfer coefficient. Okay, no need to find the average value of convective heat transfer coefficient from the correlation. What we will do, we will just perform the experiment and we will calculate the average value of convective heat transfer coefficient from the Newton's law of cooling. And so we will be able to calculate H. And after getting H, we will calculate Nusselt number by the formula HL by K. So this is how we can calculate the value of convective heat transfer coefficient Nusselt number analytically. And we will make the simulation. So we will get the simulated value of H and Nusselt number. And after this, we will compare the analytical value of H and Nusselt number with the simulated values. That's it. So our work is very simple. Fine for the virtual lab. Now, okay, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ नारायण आपके लिए सेटअप वैसे मैंने डिस्कस कर लिया था. Okay, so in this setup, basically, the setup consists of a duct which is open at the bottom and at the top. Okay, so this duct will act as the enclosure which will serve the purpose of the surrounding for the natural convection.
Okay, so we have taken a duct or the rectangular tube which is open at the bottom and at the top, and we have fitted the metal cylinder vertically inside this duct. Okay, and we have placed the heater along the length of this metal cylinder, and we have placed the four thermocouple at the four different location along the length of the metal cylinder, that is T2, T3, T4, and T5, and we have placed two thermocouple T1 and T6 for measuring the ambient temperature, that is the temperature of air inside the duct. Okay, so air will flow from the bottom to the top naturally. Okay, we have not taken any external agency like fan or blower. Okay, just air is flowing naturally or freely. That's why it is natural convection. Okay, so you can see here, this is the rectangular tube or the duct. Here we have taken the material as wood. That's why it is the wooden hollow rectangular tube. So it is a wooden rectangular duct. What is this? This is a heater that we have placed inside the metal cylinder, which we have placed vertically. Okay, now this is what? This is the hollow metal cylinder. These are the thermocouples T2, T3, T4, T5. The thermocouple on the surface of this tube or the metal cylinder. So we have placed four thermocouple at the four different locations along the length of this metal cylinder. T1 and T6, two thermocouple we have used for measuring the ambient temperature or the air temperature. Okay. So basically we have to we will how can we perform this experiment? We will when we perform this experiment physically in the lab. So we have to record the temperature value at the six different location, that is four on the metal cylinder and two for measuring the ambient temperature, again and again every after 15 minutes till we achieve the steady state values, and after achieving steady state we have to use the steady state temperature values for making calculation. Okay, but so this is how we perform the experiment in the lab. But and here it is very simple to achieve the steady state. You just run the simulation. So simulation will be completed within a half minute, and we will be able to get the steady state. So it will not take much time to get the steady state in the virtual lab. Okay, now the theory related to this here, this is a theory related to the conduction. That's why it is shown that the Fourier's law of heat conduction, Q is equal to Ka delta T by L. Okay, where K is the thermal conductivity, is the area, delta T temperature difference, L is the thickness, and small t is what? Small t is the time factor. So ignore this time factor since we are making the analysis for the steady state. Fine. Now here we are not talking about the conduction. Okay, so conduction may take place if we consider the thickness of this tube. Okay, so heat transfer takes place by the conduction through the thickness of this tube, that is the metal cylinder. But we are not going to make the analysis. Okay, so ignore this. Now we are going to make the analysis for the natural convection. So we will apply the Newton's law of cooling, that is Q is equal to HA delta T, where H is the convectivity transfer coefficient, A is the surface area, delta T is the temperature difference. So ignore this small t. Small t is the time factor since we are going to make the analysis for the steady state. Fine. Now we know what is Nusselt number. In fact, we have discussed the physical significance and the importance of all the dimensionless number well in detail in the lecture. So we know this Nusselt number is HL by K. Fine, where H is the convectivity transfer coefficient, L is the characteristic dimension, and K is the thermal conductivity. So this Nusselt number can be either HL by K or HD by K. Okay, so it depends what is our characteristic dimension. So it can be length or it can be diameter. So here it is L. L is the characteristic dimension. That's why the Nusselt number is HL by K. Fine. Now, fine. So here, so that's why with this expression we can calculate H, that is the convectivity transfer coefficient, and with this expression we can calculate Nusselt. This is how we can calculate the analytical value of convectivity transfer coefficient and Nusselt number. Now these are the applications mentioned here where we can see the natural convection. We can see the natural convection phenomena from the cooling of the commercial high voltage electrical power transformer, in the heating of the houses by the electrical baseboard heaters. Okay, general application is, you can see, we can see the heat loss from the steam pipelines in the power plant and heat gain in the refrigerant pipelines.
in air conditioning application, and so on. So these are the various applications of this natural convection. Now let's see the procedure. So we'll click on the procedure tab. So you just see the steps. You just read each and every step and just follow it. So we will be able to perform this natural convection experiment very comfortably. First step is we have to choose the material. So from the drop down list, we'll choose the material. Now we can choose the side of this wooden box. Okay, so why we have taken the wooden box? Why we have taken the material as the wood? Because you can see here in the theory tab, what is this? This is a duct. So basically, when we'll provide the power supply to the apparatus, so we'll on the heater will heat the surface of this metal cylinder. So heat transfer takes place by the natural convection from the surface of this metal cylinder to the air that is available inside this duct. So basically, we will take some insulating material as a material for this duct in order to minimize the heat loss to the surrounding. Okay, so we will take any better insulator. Okay, so it can be wood, it can be glass. Fine. So to minimize the heat loss to the surrounding. Now, okay, let's come to the procedure. So first step is we will choose the material. The drop down list is there. From the drop down list, we'll choose the material. Oh, aluminium, copper. है ना? Likewise, we can select the material. Now the side of the wooden box, a drop down a slider is there. So with the help of slider, we can change the dimension for the side of the wooden box. Okay, by changing the by sliding the slider, we can give the input value to the height of the wooden box. Okay, in the similar fashion, by sliding the slider, okay, by just sliding the slider, we can assign the input value to all the parameter. Okay, we can give the input value to diameter of cylinder, length of the cylinder, thickness of the cylinder, and the white knob is there. I will show it to you. It's shown, in fact, a white knob is there. You just see this one, this white knob. I will click here on this arrow, so so voltage will increase, and I will click when I will click on this left arrow, so the voltage will decrease. Okay, so with the help of this white knob, I can give the voltage value. Now I will click on power on, so it will start the simulation, and the temperature indicator is there. Okay, so it will show the temperature values at the different location. You just see the stopwatch will show the time, how much time it has taken, and this is the temperature indicator. So temperature indicator will show the temperature values. So you just see this arrow. When I will click on this arrow, so I can go I can increase the this temperature value. Okay, I can go in the increasing order. I can say T1 है ना, T2, T3, T4 है ना, आगे की ओर जाएंगे. When I will click on this arrow, and I will click on this arrow, so I will go in the decreasing order, in the descending order. Fine. जैसे T6 से है पर है तो T5 में जाएंगे, T4 में जाएंगे, T3 में जाएंगे, है ना. अगर decreasing order में जाना, then I will click on left arrow, and when I have to go on the increasing order, that means from T1 to T2, from T2 to T3, I will click on this right arrow. So यहाँ से we will be able to note down the temperature value from T1 to T6, और time यहाँ से आ जाएगा आपका stopwatch से, and this is the main switch. Fine. सर वो जो रेड वाला है जो आप बता रहे थे पहला वाला, हाँ, कौन सा? मतलब सिमुलेशन में हाँ हाँ, बताइए. ये रेड वाला, ये इसकी बात कर रहे हैं? हाँ सर, ये थर्मोकपल का बता रहा है, थर्मोकपल का. हाँ हाँ, थर्मोकपल का. देखो जहां जहां थर्मोकपल प्लेस है ना, T1 और T6 किसके लिए प्लेस है? एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एयर टेम्परेचर इनसाइड दिस डक्ट. और T2, T3, T4, T5, we have placed the 4 thermocouple at 4 different location along the length of this metal cylinder. ठीक है. तो T1 to T6 टेम्परेचर जो वैल्यूज जो आएंगी वो हम ये टेम्परेचर इंडिकेटर से नोट करेंगे. ठीक है. अच्छा, तो इसको बस उधर एरो पे क्लिक करना है, वो टेम्परेचर दिखाएगा. हाँ हाँ, करेक्ट, बिल्कुल वैसे ही. ओके, आपको बस पावर ऑन कर देना है. उसके बाद इट विल टेक अराउंड आई कैन से 20 seconds टू मेक द सिमुलेशन. तो उसके बाद वो आपका सिमुलेशन हो जाएगा. उसके बाद फिर आप जस्ट सारी वैल्यूज नोट डाउन कर लो. यहाँ पर आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे बॉटम राइट कॉर्नर में, और यहाँ पर आपके टेम्परेचर वैल्यू आप ये एरो से क्लिक करके यू कैन नोट डाउन ऑल द वैल्यूज फ्रॉम T1 टू T6. ओके, ओके. आई विल शो दिस, है ना, अभी हम करेंगे. ओके, चलिए अभी हम आ जाओ ये प्रोसीजर पर. प्रोसीजर फॉर सिमुलेशन, choose a particular material to carry out the experiment. Same procedure है ना. Drop down list से we'll select a particular material for which we want to make the simulation.
Now by sliding slider we'll change the height and the side of the wooden box. Okay, now by sliding the slider we can adjust the diameter, length and the thickness of the cylinder. Okay, now we will click on the knob and a white knob to adjust the voltage value, and we'll note down the corresponding current value. And after achieving the steady state, we'll note down the temperature value from T1 to T6 with the help of temperature indicator. And then when we'll click on the result, so we can get we can show it will show the simulated result for H and Nusselt number on the bottom right corner. So these will be okay. So these results will be the simulated results. Fine. अभी देखो हम अगर लैब में परफॉर्म करते हैं तो कैसे परफॉर्म करते हैं करेंगे. यहाँ पर आप देखो नंबर सीरियल नंबर 1 मेटल यूज यू राइट द मटेरियल एल्यूमिनियम सेकंड टाइम हमने कॉपर किया है ना एंड सो ऑन यू मेंशन द मटेरियल वोल्टेज वैल्यू सपोज 100 वोल्ट्स यहाँ पे करस्पॉन्डिंग करंट वैल्यू मेंशन करो एंड आफ्टर अचीविंग द स्टेडी स्टेट यू नोट डाउन द टेम्परेचर वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल सिलेंडर T2 T3 T4 T5 एंड है ना एंड द स्टेडी स्टेट एम्बिएंट टेम्परेचर इज T1 एंड T6 ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड मटेरियल के लिए करो सीरियल नंबर 2 सपोज इट इज कॉपर है ना उसका वोल्टेज वैल्यू क्या है corresponding current value उसके steady state temperature value on the surface of the metal cylinder and on the steady state ambient temperature. Okay, so we can fill the table like this. Now now how can we calculate Q? Okay, you just ignore this small t, you just write Q. Q is equal to, what is Q? Q is the heat input, and heat input is nothing but the product of voltage and current. So how can we calculate Q? We know the value of voltage and we know the corresponding current value. We'll take the product of voltage and current, and this way we can calculate the heat input value. How can I calculate area? This is surface area. So this is the metal. This is a cylinder. Okay, this is a tube. This is a cylinder. So okay. So tube is like a cylinder. So the surface area for the cylinder is pi into d into L. D is the diameter of the cylinder. L is the length. So we know the diameter and the length. We'll take the product. In this way we can calculate the surface area. Now we know the formula for calculating H. We'll apply the Newton's law of cooling. So Q is equal to HA delta T. Q कैसे calculate किया हमने? By taking the product of voltage and current. Okay, now surface area we have calculated. Now how to calculate this delta T? What is delta T? Delta T is Ts minus Ta. What is Ts? Ts is the average steady state temperature value on the surface of the metal cylinder, that is T2 plus T3 plus T4 plus T5 divided by 4. And what is Ta? Ta is the average steady state temperature of the surrounding, that is T1 plus T6 divided by 2. So we'll take the difference. So this is how we can calculate delta T. So Q is equal to HA delta T. Okay, so Q हमने calculate कर दिया by taking the product of voltage and current. Surface area we have already calculated. Delta T we have already calculated. In this way we can calculate convective heat transfer coefficient. So this is how we can calculate the convective heat transfer coefficient analytically. Now we have to calculate Nusselt number. So Nusselt number is equal to HL by K. The H value we have already calculated. We know the length of the we know the characteristic dimension of this tube. Okay, that is the length of the tube. You just mention the length of the tube and divided by K. K is the thermal conductivity of air. Okay, so what is normal procedure to take the thermal conductivity of air? You have to take you have to calculate the mean film temperature. What is mean film temperature? Ts plus Ta divided by 2. That mean film temperature is nothing but the average of the surface temperature and the ambient temperature. So at mean film temperature, from the properties of saturated air table, you have to take the thermal conductivity of air. But the things okay, so we have made your things simple. So here the thermal conductivity value is directly mentioned. So you just directly take the value. K is equal to 0.024 watt per meter per Kelvin. Okay, so you just take this value directly. So Nusselt number is equal to HL by K. So you will be able to calculate the Nusselt number. So this is how you can calculate the Nusselt number analytically. Okay, so you mention the results here. Okay, यहाँ पर आप result mention कर दो. Analytical value of convective heat transfer coefficient and analytical value of Nusselt number. Fine. Now we will go to the simulation. सर ये वाले रीडिंग्स में एनालिटिकल डालना है कि सिमुलेशन वाला? किसमें? अभी जो नीचे रिजल्ट्स था उसमें हाँ जो हाँ
इसका इसमें कौन मैंने सा आपको जस्ट, हाँ मैं समझा, इसमें मैंने जस्ट आपको बताया कि एनालिटिकली आप कैसे करेंगे। आपको ओके इसमें कुछ नहीं करना है, आपको देखो आपको टेम्पलेट कंप्लीट करना है अपना। तो टेम्पलेट देखो कैसे आप वर्चुअल लैब डिटेल क्लिक करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। पूरा थ्योरी टाइप के डिटेल्स कॉपी पेस्ट कर दो, पूरा प्रोसीजर टाइप के डिटेल्स कॉपी पेस्ट कर दो, और उसके बाद आप सिमुलेटर में विदाउट परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट सेटअप डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके इधर कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो वर्चुअल लैब डिटेल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एनालिसिस में केस 1 केस 2 है, 5 मटेरियल है, तो इसके 5 सिमुलेशन होंगे केस 1 के, और केस 2 के भी 5 सिमुलेशन होंगे। फॉर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी सिमुलेशन यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, कॉपी दैट स्क्रीनशॉट एंड पेस्ट इट हियर। तो केस 1 के 5 स्क्रीनशॉट, केस 2 के 5 स्क्रीनशॉट। ठीक है। यहाँ जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, यहाँ पर आप बस 2 सैंपल कैलकुलेशन के लिए ये कैलकुलेशन दिखा देना जो आप कह रहे हैं ना, ये एनालिटिकल कैलकुलेशन फॉर एच एंड नसल नंबर फॉर एनी टू सैंपल कैलकुलेशन। ओके सर। ठीक है। चलिए, है ना, इसके बाद फिर आपका कुछ भी नहीं रहता है, फिर आप यहाँ पर 2 सैंपल कैलकुलेशन दिखा दिया आपने एनालिटिकल, है ना, हाउ टू सैंपल कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग कन्वेक्टिविटी ट्रांसफर कोफिशिएंट नसल नंबर, और इधर आप रिजल्ट दिखा दो। रिजल्ट आप मतलब टेबुलेटेड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, एच और नसल्ट नंबर का एनालिटिकल और सिमुलेटेड रिजल्ट। सर जो सिमुलेशन से सब जो वैल्यूज आएंगे वो टेबल में उसका स्क्रीनशॉट डालना है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट जब आप लोगे ना तो उसमें सब वैल्यूज आ जाएंगे डायरेक्टली, लेकिन यहाँ रिजल्ट में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा टेबल बना के, ओके सर। है ना। और कंक्लूजन में जब फिर आपके रिजल्ट कंपेरेबल आ ना, तो फिर यू राइट द मीनिंगफुल कंक्लूजन एट द लास्ट। ओके सर। ठीक है। और ये जस्ट, और देखो अभी कैसे लिख सकते हो मैं बताता हूँ। रिजल्ट आप ऐसा बना सकते हो, मैं 1 मिनट, देखो आप टेबल ऐसा बना सकते हो। देखो इधर आपका आ गया जैसे एच और नसल्ट नंबर। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका सिमुलेटेड रिजल्ट क्या आ रहा है, और यहाँ पर आपका एनालिटिकल रिजल्ट क्या आ रहा है। इस तरीके से यू कैन राइट, तो यू विल मेंशन द एच वैल्यू, सिमुलेटेड रिजल्ट, एनालिटिकल रिजल्ट, और ना नसल वैल्यू, सिमुलेटेड और एनालिटिकल। इस तरीके से आप ऐसा लिख सकते हो, केस 1, फिर यहाँ 2, 3, ऐसा करके। ठीक है। अंडरस्टूड। हाँ सर, ये कैलकुलेशन में डालना है ना सर, रिजल्ट में डालना है ना ये? हाँ हाँ, रिजल्ट में। ओके सर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, 1 के लिए क्या आया, 2 के लिए क्या आया, 3 के लिए, ऐसा है ना, आप ऐसा टेबल बना सकते हो सीरियल नंबर वगैरह करके। फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, है ना, ऐसा 4, 5 ऐसा करके कर सकते हो, तो है ना, दिस इज वन वे टू प्रेजेंट द रिजल्ट। अदरवाइज आपको जैसा आप प्रेजेंट करना चाहें वैसा भी कर सकते हैं। ओके सर। ओके, अभी देखते हैं सिमुलेशन कैसे करते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, जैसे हम फिर देखते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट।
Okay. So, yes, are you able to see my screen? Yes, please confirm. Hello. हाँ सर। Okay. सर ये जो कैलकुलेशन का ये सब जो पार्ट है इसमें कुछ ऐड नहीं करना है ना, बस टेबल फिल करना ना। नहीं नहीं, कैलकुलेशन जो है आपने इसमें आपको कुछ नहीं करना है, समझाने के लिए बताया। देखो आप तो टेम्पलेट कंप्लीट करो, दैट्स इट, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो है ना? पीछे वाले पेज में वो आप सर वो वाले जाओ ना वर्चुअल लैब वाले पेज पे। हाँ हाँ ये सब सर, ये सब ऐड किया ना हम लोग ने उसमें, उसके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ देखो, ये सब कॉपी करके पेस्ट कर देना उधर वर्चुअल लैब डिटेल में, यहाँ पे चला जाएगा ना पूरा। हाँ सर, उसको या, पेस्ट करना, बट उसको फिल भी करना है ना, कि उसको रहने दो। वो मैं आपको बताता हूँ, अभी वो फिल हो जाएगा। अभी ओके हम सर। सिमुलेशन, हाँ सिमुलेशन करेंगे ना, तो वो मैं आपको टेबल बताऊंगा। मैंने बताया था ना एनालिटिकल कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ओके सर। उसे ऑटोमेटिक वो टेबल्स बन जाएंगे, आपको उधर कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ये तो समझ में आया ना कैसे टेम्पलेट कंप्लीट करना है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, हम जाएंगे। हाँ, आपको दिख रहा है ये स्क्रीन? हाँ सर। चलिए अभी हम ये देखेंगे सिमुलेशन में। सो जस्ट विल सी हाउ टू मेक द सिमुलेशन। विल क्लिक ऑन सिमुलेटर। ओके, अभी यहाँ पे यू क्लिक हियर, सो द यू विल बी एबल टू ओपन दिस इन द फुल स्क्रीन। ठीक है, अभी आप लोग वैल्यूज लिखते जाना, क्योंकि पहला केस जो है अपना सेम इनपुट वैल्यू के लिए, अदरवाइज हमें याद नहीं रहेगा इनपुट वैल्यूज क्या लिया है। तो ओके, आई एम राइटिंग दिस। अभी देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखो दिस इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी देखो सेटअप अपने को वही है, ठीक है। Duct is open at the bottom and at the top. Metal cylinder is fitted vertically inside this duct. 4 thermocouples are placed on the metal cylinder. 2 thermocouple for measuring ambient temperature. Voltmeter, ammeter, white knob for controlling, for adjusting voltage value. Temperature indicator for recording temperature value. Main switch and stopwatch. ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यू वी कैन सेलेक्ट अ मटेरियल एट अ टाइम। अभी देखो सपोज मैंने पहले लिया एल्यूमिनियम ही लिया। अभी देखो विड्थ ऑफ वुडन बॉक्स सपोज मैंने लिया 8 सेंटीमीटर। ओके, आई एम राइटिंग दिस। तो सेम के लिए अपन ले लेंगे, ठीक है। विड्थ हमने लिया 8 सेंटीमीटर। हाइट मैंने लिया सपोज 76 सेंटीमीटर। डायमीटर सपोज लिया 8.1 सेंटीमीटर। ओके, एंड ओके सपोज डायमीटर मैंने लिया सपोज 77.6 सेंटीमीटर सपोज। चलो चेंज किया है 7.6 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ सिलेंडर सपोज लिया मैंने 58 सेंटीमीटर। थिकनेस मैंने लिया सपोज 0.24 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, ये मैंने मटेरियल ले लिया, ठीक है। अभी देखो क्या करो आप, यू जस्ट क्लिक हियर ऑन द वाइट नॉब फॉर एडजस्टिंग द वोल्टेज वैल्यू। आई विल क्लिक हियर, यू जस्ट सी दिस 100 वोल्ट है एंड करस्पॉन्डिंग करंट वैल्यू है 0.2 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, यू जस्ट क्लिक हियर, शो क्रॉस सेक्शन, सो यू विल बी एबल टू विजुलाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर। ये देखो, फाइन। अभी देखो ओके, नाउ we will click on power on to start the simulation. You just see temperature is changing. थोड़ी देर रन होने दो से। ये देखो 20 मिनट जैसे ही पहुंचेगा वो स्टडी स्टेट उसने अचीव कर लिया। टेम्परेचर स्टॉप्स चेंजिंग।
ठीक है, ये फ्लो तो अपने आप दिखता रहेगा, दैट मीन सिमुलेशन इज ओवर। अभी आप क्या करो, इसको स्क्रॉल करो यहाँ पर एंड सर स्टेडी स्टेट के समय टाइम अपने आप स्टॉप हो जाएगा? हाँ, एक्चुअली ये वर्चुअल लैब में क्या होता है कि इधर इन्होंने फीड किया हुआ, जैसे यहाँ 20 मिनट्स होगा वैसे ही वो स्टडी स्टेट पहुंच रहा है। ओके ओके, तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है ना। अल्टीमेटली वी नो व्हाट इज स्टडी स्टेट, टेम्परेचर स्टॉप्स चेंजिंग, है ना। तो वो उन्होंने ऑटोमेटिक वैसा प्रोविजन करके रखा है, एज सुन एज द स्टॉप वॉच रीचेस 20 मिनट्स तो वो स्टडी स्टेट आ जाता है, ठीक है। ओके एंड ये स्टॉप वॉच का 20 मिनट्स है, वो एक्चुअल में तो दिस विल बी कंप्लीटेड विद इन अ मिनट। ओके ओके, अभी देखो ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए, ठीक है। एच वैल्यू कितना आ रहा है, 2.38158। अच्छा, ये यूनिट रॉन्ग लिखा हुआ है, इसमें आप करेक्शन कर लेना। इट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पर यूनिट करेक्ट कर लो, यहाँ पे इनकरेक्ट यूनिट लिखा हुआ है। इट इज 2.38158 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। नुसेल्ट नंबर इज दिस 75.41682। मैं रिजल्ट नोट करता हूँ। एच अपना है दिस इज 2.38158 watt per meter square Kelvin and the Nusselt number is 75.41682, ठीक है। अब देखो द सिमुलेशन इज ओवर। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी सिमुलेशन यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, कॉपी दैट स्क्रीनशॉट एंड पेस्ट इट एट द वर्ड फाइल टेम्पलेट एट द रिक्वायर्ड प्लेस। अभी देखो आपको टेम्पलेट किस सिचुएशन में लेना है ये याद रखो। सबसे पहले तो आपका ये फुल स्क्रीन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से एडजस्ट करो इसे कि ये देखो कि पहले इसको नीचे तक लेकर आओ। ये देखो कि शो क्रॉस सेक्शन इनेबल्ड है, जिससे सब कुछ दिख रहा है। और उसके बाद ये देखो इस तरीके से होना चाहिए कि नाउ दिस इज द राइट सिचुएशन। नाउ आई कैन सी द एंटायर सेटअप डायग्राम, है ना। एवरीथिंग आई कैन सी, है ना। वोल्टेज वैल्यू, करंट वैल्यू, टेम्परेचर इंडिकेटर वैल्यू, एवरीथिंग आई कैन सी द एंटायर सेटअप। आई कैन सी all the input values and I can see the result, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है। क्या क्या करना है, पहले तो फुल स्क्रीन में से ओपन करो और उसमें प्रॉपर इसको स्क्रॉल करके लाओ जिससे रिजल्ट्स वगैरह सब दिखें। अब देखो यहाँ पर I can see my entire setup diagram. I can see all the input values. I can see show cross section is enabled, so I can see the internal structure also, and I can see the result. Now you take the screenshot, copy that screenshot, and paste it at the required place in our Word file template. Okay. अभी चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी इसको लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सर हाँ, इसके स्क्रीनशॉट में वो सब जो डायामीटर और सिलेंडर राइट साइड में जो भी वैल्यूज है वो आना चाहिए, खाली फोटो आना चाहिए? नहीं सब आना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स, एवरीथिंग। हाँ, नहीं तो फिर तो वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा ना कुछ भी। सब हाँ आना सर। चाहिए, सेटअप डायग्राम भी, इनपुट वैल्यूज भी, ये पूरा ये रिजल्ट भी, सब कुछ। इसीलिए ठीक है आपको इस सर। सिचुएशन में लेना है कि जब आप ये यहाँ पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में ये रहेगा, और फुल स्क्रीन में होने के बाद सिमुलेशन जब पूरा हो जाएगा तो आप इस तरीके से उसको स्क्रॉल करके रखो। मेरी फुल स्क्रीन में पूरा सेटअप डायग्राम भी दिखना चाहिए, पूरा कंप्लीट इनपुट वैल्यूज भी दिखना चाहिए, शो क्रॉस सेक्शन इनेबल्ड रहना चाहिए जिससे मेरा ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखेगा और रिजल्ट्स भी दिखने चाहिए पूरे। अब इस सिचुएशन में आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं तो वो स्क्रीनशॉट मीनिंगलेस हो जाएंगे। ओके, अभी देखो, अभी मुझे हाँ नेक्स्ट सर। सिमुलेशन, हाँ अभी मुझे नेक्स्ट सिमुलेशन करना है, तो रीसेट पे क्लिक करो। अभी रीसेट पे क्लिक किया। अभी देखो नेक्स्ट मटेरियल लेते हैं, नेक्स्ट मटेरियल लिया। देखो केस वन अपना क्या है, केस वन है अपना वोल्टेज वैल्यू सेम रखना है, मटेरियल बस चेंज करना है, इनपुट वैल्यूज भी सेम रखना है, ठीक है। तो चलो इसको फुल स्क्रीन में ओपन किया, मटेरियल चेंज करेंगे अपन। यहाँ पर मैंने अभी नेक्स्ट टाइम कॉपर ले लिया। देखो देखो आपका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है। देखो जब एल्यूमिनियम था देन कैसा दिख रहा था, ये कॉपर में ऐसा आ गया। उसके बाद आयरन में देखो कैसा हो गया, सिल्वर में, यू कैन सी, स्टील में, है ना। तो फिर वो फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो रहा है। नाउ यू सी आई हैव सेलेक्टेड कॉपर। नाउ यू जस्ट सी, शो क्रॉस सेक्शन पे क्लिक किया मैंने।
अभी देखो सेम इनपुट वैल्यूज आई विल गिव, क्या दिया था मैंने, विड्थ दिया था 8 सेंटीमीटर लास्ट टाइम भी, क्योंकि सेम इनपुट वैल्यू ही रखना है। ओके 8 सेंटीमीटर। अपना हाइट ऑफ वुडन बॉक्स कितना लिया था, 76 लिया था। डायमीटर हमने कितना लिया था, 7.6 सेंटीमीटर लिया था। लेंथ हमने 58 सेंटीमीटर लिया था। थिकनेस हमने 0.24 सेंटीमीटर लिया था। ओके, सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव चेंज द मटेरियल। पहले एल्यूमिनियम था, अभी कॉपर लिया। सेम इनपुट वैल्यूज और सेम मुझे वोल्टेज वैल्यू देना है, तो 100 वोल्ट मैंने वोल्टेज दिया था। दिस टाइम आल्सो आई विल गिव 100 वोल्ट्स। ओके, नाउ आई हैव टू स्टार्ट द simulation. So click on power on. You just see the iteration is going on. Okay, iteration is going on. You can see the flow. Simulation. Okay, as soon as this stopwatch reaches 20 minutes, so it will stop. The temperature will stop changing. Yes, it has reached 20 minutes. The temperature stop changing. That means it has achieved steady state. Now the simulation is over. Now you just click the Sir. result. Yes. सर कॉपर का स्टेडी स्टेट अचीव होने के लिए थोड़ा जल्दी होगा ना, मतलब 20 मिनट से थोड़ा जल्दी होना चाहिए ना, क्योंकि वो ज्यादा कंडक्टिव है। हाँ देखो, जब हम फिजिकली करेंगे ना, जब है ना, व्हेन विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट फिजिकली, तब ये डिफरेंस आएंगे। यहाँ पर वर्चुअल लैब में क्या किया हुआ है, उन्होंने एक ऐसा प्रोग्रामिंग करके रखा है कि 20 मिनट्स में स्टडी स्टेट आ रहा है। ओके सर। ओके, ये सारी चीजें जो हैं तब कंसीडर होंगी जब हम फिजिकली ये सेटअप, फिजिकल सेटअप में जब हम लैब में परफॉर्म करेंगे। ओके सर। हाँ अभी देखिए रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट इज है ना, H इज इक्वल टू 2.38394 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और नसेल्ट नंबर आपका आ गया 75.49128। ओके, सो दिस रिजल्ट वी गॉट। अब इस सिचुएशन में है ना, इस तरीके से, अब नाउ माय एंटायर सेटअप इज विजिबल, ऑल द इनपुट वैल्यूज आर विजिबल, सो क्रॉस सेक्शन इनेबल्ड है फुल स्क्रीन में। ये मैंने ओपन करके रखा है और सभी रिजल्ट दिख रहे हैं। इस सिचुएशन में यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, कॉपी दैट स्क्रीनशॉट एंड पेस्ट इट एट रिक्वायर्ड प्लेस इन आवर वर्ड फाइल टेम्पलेट। ठीक है, तो इस तरीके में सेकंड सिमुलेशन कर लिया। अब मुझे थर्ड करना है, रीसेट करो पर क्लिक करो। अभी सिमिलर फैशन है, आप 3 मोर मटेरियल के लिए कर लेना, आयरन के लिए, सिल्वर के लिए, स्टील के लिए, है ना। इनपुट वोल्टेज सेम ही रहेगा, जो भी आपने लिया है। अभी 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट ही लेंगे और सेम इनपुट वैल्यूज लेंगे, है ना, और सिमुलेशन कर लेंगे। और आपका सिमुलेशन होने के बाद लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी करके पेस्ट कर देना। ओके, सो आपका यहाँ पर केस 1 के 5 स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, केस 2 की बात करें तो केस 2 में आपको क्या करना है, केस 2 में आपको देखो, केस 2 में आपको क्या करना है, मटेरियल चेंज करना है। यानी सपोज मैंने कॉपर लिया, अभी मेरे को इधर वो ये इनपुट वैल्यूज चेंज कर देनी है, कुछ भी लेना है। जैसे हाइट मैंने ले लिया 73 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ वुडन बॉक्स 8.3 सेंटीमीटर ले लिया, डायमीटर 8.8 सेंटीमीटर ले लिया, लेंथ सपोज मैंने 59 सेंटीमीटर ले लिया, थिकनेस मैंने सपोज 0.18 सेंटीमीटर ले लिया। तो इस केस में, सेकंड केस में क्या करना है, वी हैव टू चेंज द मटेरियल एंड वी हैव टू चेंज द इनपुट वैल्यूज, बट वी हैव टू टेक द सेम वोल्टेज वैल्यू। यानी अगर 100 वोल्ट लिया है तो 100 वोल्ट ही लेंगे सभी, फॉर ऑल द 5 मटेरियल। एंड we'll click on power on। पहले इसको वो कर लेंगे, शो क्रॉस सेक्शन। नाउ we click on power on। ठीक है, नाउ इट हैज अचीव्ड स्टडी स्टेट। ठीक है, अभी इसका रिजल्ट देखो, ये आ गया 2.00311, रिजल्ट नंबर इज दिस 60.92। फाइन, नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट, copy that screenshot and paste it at the required place in our word file template for case 2।
ठीक है, तो ऐसे ही आप करते जाना, मटेरियल चेंज करते जाना और इनपुट वैल्यूज चेंज करते जाना, वोल्टेज वैल्यू सेम रखना। इस तरीके से 5 मटेरियल्स के लिए 5 सिमुलेशंस हो जाएंगे। सर इनपुट वैल्यूज हम लोग अपने हिसाब से ले चलेगा? हाँ, अपने हिसाब से ले लो। ओके सर। ठीक है, अब मैं आपको एनालिटिकल का और दिखा देता हूँ कैसे करना है ना। दिस इज द लास्ट पार्ट, सो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो, एक बार एल्यूमिनियम का जो हमने किया था वो एक बार फिर से देखते हैं। तो मैं आपको टेबल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, T1 का अपने को टेम्परेचर का वैल्यू मालूम होना चाहिए ना, एक बार देख लेते हैं। देखो, एल्यूमिनियम का सपोज मैंने किया, अभी देखो इसका मैंने वैल्यू लिया 8 पॉइंट सपोज 8 सेंटीमीटर। तो केस 1 केस 2 कैसे करना है समझ में आ गया ना? हेलो, हाँ सर। ओके। अभी देखो, विड्थ ले लिया मैंने, इसका हाइट ले लिया 76, डायमीटर ले लिया 7.6 सेंटीमीटर, लेंथ ले लिया मैंने 58 सर अभी सेंटीमीटर आप थिक। केस 2 का कर रहे हो? हाँ अभी आप केस 2 के लिए कर रहे हो? हाँ, मैंने अभी केस 1 के लिए दिखाना, चलो केस 2 के लिए कर लेते हैं। ओके, अभी मैं केस 1 के लिए, मैं एक्चुअली आपको टेबल दिखाने वाला था कि कैसे आप एक्सेल शीट में वो कंप्लीट कर सकते हैं। वो जो अपना टेबल दिया है ना कि एनालिटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके उसलिए सर। अपने को T1 T2 चाहिए ना वो चीज। चलो केस 2 के लिए कर लेते हैं, है ना। चलो केस 2 के लिए, चलो सपोज इस बार मैंने आयरन लिया। आयरन के बाद मैंने सब है ना, इस बार मैंने वैल्यूज भी चेंज ले ली है। 9.1 सेंटीमीटर हाइट मैंने ले लिया है, 74 डायमीटर 6.3 सेंटीमीटर, लेंथ ले लिया 55 सेंटीमीटर, थिकनेस ले लिया सपोज 0.15 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने क्या किया, शो क्रॉस सेक्शन में क्लिक करो। अभी मैंने क्या किया, मटेरियल भी चेंज किया और इनपुट वैल्यू भी चेंज किया और वोल्टेज वैल्यू मैंने 100 वोल्ट रखा। तो केस 2 का ही करना है, ठीक है। अभी आई विल क्लिक ऑन पावर ऑन। तो इस तरीके से आप केस 2 का कर सकते हैं ना, बस मटेरियल भी चेंज करते जाओ, इनपुट वैल्यूज भी चेंज करते जाओ, बस वोल्टेज वैल्यू सेम रखना है। ओके, सो इट हैज रीच्ड 20। ओके, सो इट हैज अचीव्ड स्टडी स्टेट। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट कोई आ गया 3.34, है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। दिस कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट नसेल नंबर 103। ठीक है, चलो इसको लिख के रखते हैं। अब हम इस केस का मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अभी देखो, विड्थ इज, मटेरियल इज आयरन, width 9.1, height 74, diameter 63, length 55, thickness 0.15। ठीक है, और H का वैल्यू क्या आ गया, H इज 3.34 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, नसल नंबर इज 103.10806। ठीक है, तो इस तरीके से आप केस 2 का कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट में भी आप बस मटेरियल चेंज करते जाना, है ना। चलिए अभी हम इसको नेक्स्ट इसको स्मॉल स्क्रीन में किया। अभी देखो, अभी टेबल में कैसे करेंगे इसका ही केस लेते हैं। देखो आयरन, आयरन के देखो वोल्टेज वैल्यू कितना है, आप ही लोग बताओ। 100 वोल्ट, करंट 0.2। तो देखो आयरन वाले टेबल में आप इधर 100 वोल्ट पुट करो, करंट 0.2 एम्पियर। ठीक है, अभी डायमीटर पुट करो। डायमीटर कितना था सिलेंडर का, यहाँ से देखो आप, डायमीटर डायमीटर है 6.3 सेंटीमीटर, लेंथ है 55 सेंटीमीटर। डायमीटर 63, लेंथ इज 55। तो पाई डीएल से ऑटोमेटिकली इट विल कैलकुलेट द सरफेस एरिया। अभी देखो T2 T3 T4 T5 ये वैल्यूज कहाँ से आएंगे, ये देखो आप यहाँ पे क्लिक करो तो यू विल गेट दिस। आप ही लोग बोलो T2 के कितना दिख रहा है, हेलो। 23.98। हाँ 23.98। अभी T2 T3 देखेंगे,
I will click here. What is T3? T3? आप ही लोग बोलते जाइए, कितना है T3? हेलो, 25.98। अच्छा 25.98 है ना। चलो मतलब आ गया समझ में आप लोगों को। तो अभी मैं दिखा के करता जाता हूँ 25.98। अभी देखो T4, इधर T4 पे क्लिक किया, देखो ये टेम्परेचर आएगा 29.98, ठीक है। ये अपना आ गया 29.98। T5, T5 है 31.98। देखो एवरेज वैल्यू उसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रही है। एवरेज वैल्यू क्या है? एवरेज स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल सिलेंडर। अभी T1 और T6 का वैल्यू हम पुट करेंगे। someone has come। ओके, अभी हम T1 और T6 का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो T6 36 है, यहाँ मैंने कैलकुलेट किया T6 36। अभी हम T1 पे जाएंगे, तो इधर पर ये देखो लेफ्ट एरो को क्लिक करो, ये T1 आ गया। T1 इज 30, T1 इज 30। तो 30 एंड 36 का एवरेज ऑटोमेटिक आ गया 33। अब देखो ऑटोमेटिक वो वैल्यू आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पर। ओके, माइनस साइन यू इग्नोर, क्योंकि वो क्या है कि टीएस माइनस टीएस से उसने ले लिया है, सो यू इग्नोर माइनस साइन। So 3.66 is the convectivity transfer coefficient and Nusselt number is 83.91. ओके, सो आप देखो सिमुलेटेड रिजल्ट अपना कितना आया था? सिमुलेटेड रिजल्ट वाज 3.34 वाज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो यहाँ पर अपना एनालिटिकल रिजल्ट आ गया 3.66। तो रिजल्ट कंपेरेबल है। और नसल नंबर उधर आया था अपना सिमुलेटेड वैल्यू ऑफ नसल नंबर 103.108, तो यहाँ पर आ रहा है 83.91। ओके, सो रिजल्ट्स आर कंपेरेबल। ओके, तो इस तरीके से ही आप देखो केस 1 के लिए है ना, पूरा ये सिमुलेशन होने के बाद आप ये टेबल फिल करके और एनालिटिकल रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। और ऐसे ही केस 2 के लिए आप है ना, सिमुलेशन होने के बाद ये एनालिटिकल रिजल्ट्स के लिए पूरा टेबल फिल कर सकते हो और आप एनालिटिकल रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको 2 सैंपल कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग एनी 2 सैंपल कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग H and Nusselt number. How will you calculate the analytical value of H and Nusselt number? So 2 time sample calculation you have to show here. हाँ नारायण बोलो। सर फॉर ईच केस टू कैलकुलेशन मतलब नहीं देखो H कोई भी केस 1 के लिए एक सैंपल कैलकुलेशन दिखा देना, केस 2 के लिए एक सैंपल कैलकुलेशन दिखा देना, किसी एक केस के लिए, कोई भी मटेरियल के लिए, एल्यूमिनियम या कॉपर कोई भी। ओके सर। है ना? सर पूरा फॉर्मूला के साथ दिखाना है कि इससे हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू के के? हाँ फॉर्मूला ओके के सर। साथ Q इज इक्वल टू एच डेल्टा टी, नसल नंबर इज इक्वल एच एल बाय के, उसमें वैल्यू पुट करके कैसे क्या आ रहा है वैल्यू, है ना। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया ना, थोड़ा थोड़ा दिखा देना कैसे क्या रिजल्ट्स वगैरह, ये वैल्यूज क्या है T1 T2 T3 T4 T5 T6, है ना। अच्छा जैसे अच्छा। यहाँ हाँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था प्रोसीजर टैब में जो हमने बताया था, है ना, वैसा। ठीक है, अच्छा अभी देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ये एनालिटिकल का भी टेबल दिखाना है। तो ठीक है, अभी टेबल दिखाने के लिए क्या करो, देखो एक बार में टेबल का स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। तो देखो एक बार टेबल ऐसा करो, फिर देखो इतना पोर्शन आ रहा है, उसके बाद उसको स्लाइड करके दूसरा रिमेनिंग पार्ट आएगा। तो मे बी आपको टेबल 3 स्क्रीनशॉट्स में आ सकता है। तो आप देखो कैसे टेबल को आपको लेना है। नहीं तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप लोग वर्ड में एक टेबल बना लो ऐसा, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करके रिजल्ट जनरेट कर लो, और यहाँ से रिजल्ट्स को कॉपी करके वो वर्ड में जो आपने टेबल बनाया उसमें पुट कर देना। तो एक साथ ही एक प्रॉपर टेबल आ जाएगा, और वो टेबल को कॉपी करके यहाँ पर आप इधर पेस्ट कर देना एनालिसिस में सिमुलेशन के नीचे। ठीक है, समझ में आया ना? नहीं तो यहाँ से क्या स्क्रीनशॉट लेना आपको मुश्किल हो जाएगा टेबल का। स्क्रॉल करके 3 पार्ट्स में टेबल लेना पड़ेगा। केस 1 के लिए है ना, टेबल लेंगे 3 पार्ट्स में, केस 2 के लिए 3 बार स्क्रॉल करके टेबल लेना पड़ेगा ना, तो ब्रेक हो जाएगी टेबल। तो ज्यादा अच्छा है रिजल्ट्स यहाँ से जनरेट करो और पूरा रिजल्ट्स को कॉपी करके एक वर्ड में आप टेबल बना लो ऐसे ही कॉलम्स का, और वहां यहाँ से कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देना, और डायरेक्टली यहाँ पर वर्ड फाइल टेम्पलेट में आप वो टेबल उठा के डाल देना। अंडरस्टूड?
ठीक है ना? हेलो हेलो हेलो। यस सर। ओके। अच्छा अच्छा, एक चीज और देखो कि देखो यहाँ पर तो रिजल्ट बहुत कंपेरेबल आ गया कि देखो 3.34 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो रिजल्ट अपना बहुत क्लोज है। 3.34 एनालिटिकल में आ रहा है, और देखो यहाँ पर आपका 3.66 एनालिटिकल में आ रहा है, और सिमुलेटेड में 3.34 आ रहा है, वो है ना कंपेरेबल रिजल्ट। एंड नसेल्ट नंबर जो है 103.108 था, और यहाँ पे 83.91 है ना, नेगेटिव साइन इग्नोर कर दो। ओके, तो ये भी नसल नंबर भी कंपेरेबल आ रहा है ना, अगर कंपेयर करें एनालिटिकल रिजल्ट से सिमुलेटेड रिजल्ट को। लेकिन आपका ऐसा हो सकता है कि थोड़ा रिजल्ट वेरी कर जाए, है ना, सो डोंट वरी, आपको ये चेक करना है कि जैसे देखो नसल्ट नंबर का अगर वैल्यू जो है 2 to 25 के बीच आ रहा है, okay, the value of convective, if your convectivity transfer coefficient value is lying in the range 2 to 25 for the simulated, for the either for the simulation or for the analytical, then it is acceptable. अगर बिल्कुल है ना नियर वैल्यू नहीं भी आ रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू 2 to 25 के बीच आ रहा है एच का वैल्यू, तो इट इज एक्सेप्टेबल। और नसल नंबर में भी मे बी चेंजेस आ सकते हैं, इधर मे भी मान के चलो 70 आ रहा है सिमुलेशन से नसल नंबर, तो आपका एनालिटिकल का मे भी आ सकता है मे बी 120, ऐसा है ना, तो बिल्कुल कंपेरेबल नहीं आ रहा है, रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, बट इट इज इन रेंज, सो वी विल एक्सेप्ट दैट वैल्यू ऑफ नसल नंबर ऑल्सो। ठीक है, अंडरस्टूड? हेलो हेलो। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, अभी 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अभी आप लोग फेमिलियर हो गए इससे, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट विल नॉट टेक मच टाइम टू कंप्लीट। ओके, सो विल बी एबल टू फिनिश दिस विद इन अनदर हाफ एन आवर। ओके, तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, सो इसके बाद आप लोग फीडबैक और दे दीजिए, है ना, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। ना अभी देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी, है ना, ये आपको मैंने लिस्ट दिया था जो, तो लिस्ट में वो नाउ विल परफॉर्म द लास्ट एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट। ओके, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कैसे असेस कर सकते हैं? आइदर यू क्लिक ऑन द लिंक, अदरवाइज द सेम प्रोसीजर। जस्ट गिव मी अ मिनट।
Click on the Google. Okay. So here in the Google, we will click, we will write virtual lab Stefan Boltzmann constant Amrita lab. Okay, now the things are simple. Now you are familiar with the first experiment. So this time we will be able to perform it very comfortably. Now you click here. Okay, so it will open this page. Okay, yes, can you see my screen properly? Is anyone please confirm? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. अब देखो, okay, so we have discussed the first experiment well in detail. In the similar fashion, you have to perform this experiment. Okay, just we have to focus on the concept part. That's it. Rest of the procedure is exactly same, so it will not take much time. Okay, now you just see what is the aim for another way. These are the tabs. The theory tab is already enabled, so this will show the aim of this experiment, apparatus detail, and the principle of the this concept. Okay, and the setup diagram, the construction of the setup, and the derivation. What is the mathematical expression for calculating the experimental value of Stefan Boltzmann constant and the applications? Okay. Now the second tab, the procedure tab, here the steps are mentioned. Just follow the steps, so you will be able to perform this experiment. And then again, the tab number 4 is most useful for us. That is the simulator tab for making the simulation. Okay. Now let's see the theory tab. You just see this here. The aim is to determine the Stefan Boltzmann constant. Okay, now what is the apparatus? Apparatus, you can see the heater is there and the temperature indicators are there for recording the temperature values at a different location. A box is there containing the metallic hemisphere. Okay, and the provision is there for the water flow through the annular space of this hemisphere. Okay, so heater is there and we have provided the thermocouple at the different location on the surface of this hemisphere, and some at other location also. That means at one disk also we will place the thermocouple. So we have to record a temperature value. Okay, so with the help of this temperature indicator, we'll note down the temperature values. So a box is there that will contain the metallic hemisphere, and here in this metallic hemisphere, a provision is there for allowing the water to flow through the annulars. A suitable black body is taken which can be connected at the bottom of this metallic hemisphere, so that we will close the entire box. Okay, so no medium will be there inside the entire box, and the heat transfer will take place from the surface of the hemisphere to the surface of this disk. Okay, and we have taken a copper disk, and we will apply thick layer of lamp black color on this copper disk in order to convert this copper disk into the black body. Now we know what is the concept of this radiation. We know the Stefan Boltzmann law. The amount of heat radiated is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. So okay, so this amount of heat radiated is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. If I remove the proportionality sign, so I will write the constant sigma t to the power 4. So R is the amount of heat radiated. R is equal to sigma t to the power 4, where sigma is the Stefan Boltzmann constant, and the value of standard value of Stefan Boltzmann constant is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin to the power 4. Okay, and T is the temperature in the Kelvin. Fine. So if I remove the proportionality sign, so our equation becomes R is equal to sigma T to the power 4. Fine. Now if I have to take the emissivity also, because it is if I have to if I have take if it is a body other than the black body. Okay, if it is a body other than the black body. Okay, so that means I have to consider the emissivity also. So R is equal to epsilon sigma T to the power 4. Okay.
Just give me a minute. Fine. If it is a body other than the black body, then I have to consider the emissivity also. So the equation becomes R is equal to epsilon sigma T to the power 4, where epsilon is the emissivity of the material of the body. Sigma is the Stefan Boltzmann constant. The standard value of Stefan Boltzmann constant is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin to the power 4, and T is the temperature in Kelvin. Now, for the black body, the emissivity becomes 1. So the equation becomes R is equal to sigma T to the power 4. Fine. Now just see the schematic diagram of this setup. Now what we will do, we will provide we will take some, I can say, the geyser, and we will fill the geyser with the water. Okay, so in the geyser the heater will be there, so the geyser will heat the water. Fine. Or we can say one thing, we can take one, we will take one container, and we will fill the container with the water, and we will provide the heater. Okay, and then we will on the heater, so heater will heat the water inside this tank. Okay, so what we'll do, we will take the geyser, and we'll fill the geyser with the water. So geyser will provide the power supply to the geyser, so geyser will heat the water. Now what we will do, we have taken a box. So inside this box, a metallic hemisphere is there. And in this metallic hemisphere, the annular space is there, so we'll allow this hot water to flow inside the annular space of this hemisphere. So we have placed three thermocouple at three different locations on the surface of this hemisphere. Okay, so T1, T2, T3. And what is T4? This is a copper disc. Okay, and we have applied thick layer of lamp black color on this copper disc in order to convert this copper disc into the black body. Okay, so the temperature on this black body will be T4. So we have to record the four values of temperature, three on the surface of this hemisphere, and one for measuring the temperature on the black body. Okay, so what we have done so far, we will provide the hot water from the geyser, and we will allow the hot water to pass through the annular space of this hemisphere, and we will note down the temperature values at the different location on the hemisphere again and again till we achieve the steady state. Okay, so this is a virtual lab experiment, so no need to note down the temperature again and again. So after some considerable duration of time, we will be able to achieve the steady state. And in fact, in the virtual lab, uh, we will get the steady state values within couple of seconds. Okay, fine. So now after this, what we will do, we will okay. So we will note down the steady state temperature on this on the surface of this hemisphere at the three different location, and the ambient temperature. So finally, the ambient temperature will be same as the black body temperature. Now after this, we will fit the disk. Now what will do? What will happen? So basically, this is the arrangement inside a box. Now this box will be closed. Now in the box, no medium is there. So heat transfer takes place from the surface of this hemisphere to the surface of this black body by the radiation. Okay. Now we will note down the variation of the temperature with respect to time. The rate of change of temperature with respect to time that we have to note down in order to calculate the amount of energy stored by the black body. And this will be, that means Q is equal to mCp dt by d tau. That is, okay, dt by d tau is the rate of change of temperature with respect to time. So this is the amount of energy stored in the black body, and this will be equal to the heat transfer takes place by the radiation from the surface of the hemisphere to the black body, that we can calculate by applying the uh, Stefan Boltzmann law. Okay, अब ये देखिए, this I was saying. So delta Q. So that is okay. Simply this is Q. Okay. So heat transfer takes place by the
radiation from the surface of the hemisphere to the surface of the black body. That we can calculate by applying the Stefan Boltzmann law. So what is Stefan Boltzmann law? Q is equal to sigma A Th to the power 4 minus Td to the power 4, where A is the area of the copper disc. Okay, and fine. And what is Th? Th is the average temperature on the, okay, average steady state temperature on the surface of the hemisphere, and Td is the steady state temperature on the copper disc. Okay, now uh, we can calculate finally we will fit the disc. Okay, now the entire box is closed. So here, okay, so we will calculate the amount of energy stored in the copper disk, so that we can calculate by mcp delta t. So here it will be mcp dt by d tau. Dt by d tau is the rate of change of temperature with respect to time. Okay, so you just see this. This q is equal to mcp d capital T by d small t. Either you take this symbol or dt by d tau. You can take actually okay. So you can take any symbol. It is nothing but the rate of change of temperature with respect to time. Where m is the mass of the disk, Cp is the specific heat of the copper disk, and dt by d capital T by d small t is the rate of change of temperature with respect to time. Okay. Now by applying, we will apply the this energy equation. Okay. Fine. So we will we will equate this. We will equate the two, because the energy stored in the copper disk will be equal to the amount of heat radiated from the surface of the hemisphere to the surface of this disk. So we'll equate these two. Okay, sigma A Th to the power 4 minus Td to the power 4 is equal to mcp T capital T by d small t. Okay, the fine. Now from this we can calculate this sigma. So sigma is equal to mcp divided by a Th to the power 4 minus Td to the power 4 into dt d capital T by d small t. So this is the mathematical expression for calculating the experimental value of Stefan Boltzmann constant. Okay. Now these are the various application of the Stefan Boltzmann. Okay, these are the application of this um, set. Okay, of this black body radiation, the Stefan Boltzmann constant, determination of the temperature of the sun from its energy flux density, temperature of the stars other than the sun, and also their radius related to the sun can be approximated by the similar means. Okay, so these are the applications of this concept. Okay, now we'll go to the procedure tab. So in the procedure tab, you just see this. So ultimately, you just focus here. देखो हमें करना क्या है, the things are very simple. We know the standard value of Stefan Boltzmann constant. The standard value is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin to the power 4. अभी यहाँ पर देखो ये है mathematical expression that we have derived for calculating the experimental value of Stefan Boltzmann constant. Okay, so here m is the mass of the disk, Cp is the specific heat of the disk, A is the area of the disk, Th to the power 4 minus T to the power 4. Th is the average steady state temperature on the surface of the hemisphere, and Td is the steady state temperature on the disk. So this value is known to us. The only thing is we have to work on this d capital T by d small t, that is rate of change of temperature with respect to time. So for every particular interval of time, we have to note down the temperature value. Suppose for every after 10 seconds, we have to note down the temperature value. So we will be able to generate a graph between temperature and time. So with this, we will get the graph between temperature and the time. Okay, and then we will be able to calculate the slope, because for this temperature and time curve, the rate of change of temperature with respect to time is nothing but the slope of this graph. So we will be able to calculate this rate of change of temperature with respect to time. Now the procedure. Okay. Fine. So इस तरीके से we will feed all the values in that mathematical expression, and we will be able to calculate the experimental value of Stefan Boltzmann constant. And at the last, we will compare our experimental value of Stefan Boltzmann constant with the standard value. That's it.
This is the task. Now let's see what is the procedure. Now remove the disc from the bottom of the hemisphere. Okay. So initially we have to remove the disc from the bottom of the hemisphere. That means it should not be in the fitted condition. Okay, it should not be in the fitted condition uh, initially. And if it is in the fitted condition, okay, then we have to remove the disc from the bottom of the hemisphere. Now we have to switch on the heater. So heater will heat the water, and now we will allow the hot water to flow through the annular space of this hemisphere. And this we have placed the three thermocouple at three different locations on the hemisphere, and we have placed the entire hemisphere arrangement inside the box. Now we'll allow the hemisphere to reach the steady state, and we'll note down the steady state temperature values T1, T2, T3 at the three different locations on the surface of the hemisphere. Okay, and we will note down the ambient temperature, that will be T4. So initially the ambient temperature will be equal to the disk temperature. We have applied a thick layer of lamp black color on the disk temperature. On the we have applied a thick layer of lamp black color on the disk, that is a copper disk. Okay, in order to convert the copper disk into the black body. So okay, so we'll fit that disk, that is the black body, at the bottom of the hemisphere. So now the entire box is closed. Okay, and now we will run the simulation. Okay, so the temperature rise will take place with respect to time. So we have to note down this rise in temperature with respect to time till we achieve the steady state. So every after regular interval, that means every after 10 second or every after 20 second, we have to note down the temperature value. Okay, so with the till we achieve the steady state. So with this data, we will be able to generate a graph between temperature and the time. Okay, so we'll get the graph like this for the temperature with respect to time. Now after this, we are interested in this d capital T by d small t, that is rate of change of temperature with respect to time. That is nothing but the slope of this curve. Okay. Okay, that is this. Okay, that is d capital T by d small t. That is rate of change of temperature with respect to time. ठीक है, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा. That's it. Fine. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, we'll fit the disk. So the entire box will be closed. Okay, we'll fit the disk at the bottom of this hemisphere. The entire box will be closed. Temperature rise will be there. So we have to note down the rise in the temperature with respect to the time till we achieve the steady state. So every after a regular interval, maybe after every after 10 second or maybe every after 20 second, we have to note down the temperature value till we achieve the steady state. So we will be able to generate the graph for the temperature with respect to time. So we'll get the graph like this, and then from this we'll calculate the d capital T by d small t, that is the rate of change of temperature with respect to time. Okay, that means we will be able to calculate the slope of this graph. Okay, this is a setup diagram. Okay, I will show you this to you while performing. So सबसे पहले हमें क्या करना है? Choose the desirable value of the water temperature, the surrounding temperature, the mass, and the radius of the disk with the help of the slider. We'll click on the power on button, wait till the steady state is reached. We'll note down the steady state temperature value T1, T2, T3, and initially the ambient temperature value also, that will be T4. Now after this, note down T4 at a different interval of time till it reaches steady state temperature. Plot the temperature time graph and determine its slope, d capital T by d small t. And now feed all the values, so we'll be able to, in the mathematical expression for calculating experimental value of Stefan Boltzmann constant, so we'll be able to calculate experimental value of Stefan Boltzmann constant. This is the observation table. Okay, so we will perform this experiment in the three trials. Okay, first trial. Okay, we will note down the steady state temperature value at the three different locations on the hemisphere, that is T1, T2, T3. We'll note down the average value of steady state temperature on the hemisphere. Now T4 is the temperature of the disk in Kelvin. Now the time taken in the second, and this is the steady state temperature value of the disk in the Kelvin. Fine. For the second trial, again we will perform this experiment for the next trial, and we will perform this experiment third time also.
and ultimately we will calculate the Stefan Boltzmann. Okay, and then finally we will use the average value of all the three trials for TH and TD, and we will feed all the values in this mathematical expression for calculating the experimental value of Stefan Boltzmann constant. Okay, so basically we can do for first trial you can calculate the Stefan Boltzmann constant. Second trial you can calculate Stefan Boltzmann constant. For the third trial you can calculate Stefan Boltzmann constant, and then we'll take the average value of Stefan Boltzmann constant. That will be the experimental value of Stefan Boltzmann constant, and when we will compare our experimental value of Stefan Boltzmann constant with the standard value. Okay, this is one way. Or another way you can do like this. We are taking a trial to take the average value actually. Or you can take the average value of TH for the three trials, or the average value of this steady state temperature of the disk in the Kelvin for the three trials, and you use the average value of TH and average value of TD for the three trials here, and you will calculate the experimental value of Stefan Boltzmann constant. So this is how you can calculate experimental value, and then you can compare the experimental value with the standard value of Stefan Boltzmann. But my suggestion is you calculate Stefan Boltzmann constant for trial one, you calculate Stefan Boltzmann constant for trial two, and you calculate this Stefan Boltzmann constant for trial three, and you take the average value of Stefan Boltzmann constant. That will be the average experimental value of Stefan Boltzmann constant, and then you compare the average experimental Stefan Boltzmann constant value with the standard value of Stefan Boltzmann constant, that is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin to the power 4. Now here the mass of the copper disk, you have to mention the specific heat of copper that we can get. Okay, we can take the specific heat of the copper. Now the radius of the disk, we have to mention here area of the disk. Now the slope of the graph. Now you substitute all the values here in this mathematical expression, so we can calculate experimental value of Stefan Boltzmann constant, and we'll write the result here. That's it. Here also, when you will go to the simulation self-evaluation, so you will MCQs, you will get the MCQ, so you can solve those MCQs for testing your knowledge, for enhancing your knowledge, but it is not the part of simulation, but it is not the part of submission. And when you will click on the assignment, so you will get the assignment question. You can solve those assignment questions for testing your knowledge, for enhancing your knowledge, but it is not the part of submission. Again, the reference tab is there. Here you can get the reference for preparing this virtual lab experiment, but it is also not the part of submission. And okay, but after performing the experiment, you have to click on the feedback tab, and you have to give the feedback of the, okay, after performing this experiment without fail. Okay, so remember only three tabs are important for us. Tab number one, that is theory tab. Tab number two, that is procedure tab. And tab number four, that is the simulator tab for performing this experiment. Now let's go ahead for performing this experiment. You just click on the simulator. Okay, you just click on the simulator. Now open this in the full screen. Now, okay, I will note down the values, okay, so that I can compare the results. Okay, so suppose I have given the water temperature as 74 degrees Celsius. Okay. Now the surrounding temperature, suppose I have given this as 31 degrees Celsius. Mass of the disk I have given as 7.2 grams. Radius of the disk I have taken as 2.1 centimeter. अभी देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे? ओके, फिट द डिस्क हम नहीं कर रहे हैं. ओके, स्टार्टिंग में फिट द डिस्क नहीं होना है, करना चाहिए. ओके, इनिशियली okay, we have to ensure that the disk is not fitted. ठीक है. And if it is fitted, then we have to remove it. Ultimately starting में वो open रहना चाहिए. अभी हम क्या करेंगे? We'll click on the show cross sectional view. अभी देखो, now the entire structure we can visualize. Fine. ठीक है ना?
देखो ये क्या है, दिस इज द व्हाट, दिस इज द गीजर. First of all, we will this is the valve. Okay, from this we'll open this valve, we will feed this geyser with the water. The geyser will heat the water. Now we'll allow the hot water to pass through this hemisphere, through this annular space of this hemisphere. Okay, so this is the setup. Here we have taken a box, and inside a box we have placed the hemisphere. Okay, so this is the annular space of this hemisphere. We have placed 3 thermocouple at 3 different location on the surface of this hemisphere, and 4 thermocouple on the copper disc. So we have applied the thick layer of lamp black color on the copper disc, so it will act as the black body. So T4 will represent the temperature of the black body. Okay, so initially we have not fitted the disc. Okay, तो क्या किया हमने, we will fill the geyser with the water. So geyser will heat the water. Now we'll allow the hot water from the geyser to pass through the annular space of this hemisphere. We will allow the setup to reach the steady state. Okay, so after achieving the steady state, we will note down the temperature value at different location of the hemisphere T1, T2, T3. और T4 क्या हो जाएगा, जो एम्बिएंट टेम्परेचर होगा स्टार्टिंग में. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिट करेंगे डिस्क को, और उसके बाद ये टेम्परेचर इंडिकेटर है, यहाँ से हम नोट डाउन करेंगे टेम्परेचर. और देखो जैसे हम फिट द डिस्क करेंगे क्लिक, तो क्या होगा, इधर पर टेम्परेचर चेंज होगा, इधर यहाँ पे स्टॉप, यहाँ से टाइम चेंज होगा. तो आप टेम्परेचर चेंज जो है दैट वी विल रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटर, एंड द टाइम चेंज दैट वी विल रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच. सो एवरी आफ्टर 20 seconds you note down the temperature value. Okay, so you have the data of every after time, every after 20 seconds or 10 seconds, you know you have recorded the temperature value. So with the help of this data, you will be able to generate a graph between temperature with respect to time. Okay, and after generating the graph, so we can calculate the rate of change of temperature with respect to time. That is nothing but the slope of this graph that is required for calculating the experimental value of Stefan Boltzmann constant, because in the mathematical expression the slope is required. Okay, now let's go ahead. So we will click on power on. Okay. Okay, so now it has reached steady state. So देखते हैं, अभी देखो ये 24 हमने टेम्परेचर दिया था, वाटर टेम्परेचर. तो जितना वाटर टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर आ जाएगा T1 में, T2 में और T3 में. सो लेट्स सी, T1 is 74. Okay, T2 is also 74. Okay, and T3 is also 74. Okay, fine. So it has achieved steady state. अभी T4 क्या होगा, T4 will be equal to the surrounding temperature. Okay, that is 31 degrees Celsius. So let's see, you just see T4 is equal to 31 degrees Celsius. Abhi now what we will do, we will click on fit the disk. So kya hoga, so when we will fit the disk, so heat transfer takes place from the surface of the hemisphere to the surface of this black disk. Okay, so you will see the rise in temperature will take place with respect to time. So okay, so some particular duration of time, maybe every after 10 seconds or 20 seconds, we have to note down the temperature value till we achieve the steady state. Okay, so with this data of temperature rise with respect to the time till we achieve the steady state, we will be able to generate a graph for the temperature with respect to time. So we will be able to calculate rate of change of temperature with respect to time. That is nothing but the slope of this graph. Okay, so let's see. When as soon as I click the fit the disk, so you will see the temperature will rise, that we can record with the help of temperature indicator, and the temperature will change that we can record with the help of this stopwatch. And we have to record a temperature value with respect to time till we achieve steady state. That means temperature will stop changing. Let's see. Fit the disk. You just see temperature is rising and the temperature change takes place. Just see. Okay, 70.50. Okay, so now we have achieved a steady state. Okay, so we have recorded this temperature change for every after 20 seconds. So we will be able to generate a graph for the temperature with respect to time. That's it.
अभी देखो 70.50 है स्टडी स्टेट, देखो ये 74 है ना, ये कॉपर डिस्क हैज अचीव्ड दिस स्टडी स्टेट। ठीक है, तो T1, T2, T3 is the 74 the steady state, and T4 is this 70.5 the steady state temperature. That's it. In this situation, you just take the screenshot, copy that screenshot, and paste it at the required place in our Word file template. ठीक है, अभी नेक्स्ट सिमुलेशन आपको करना है, देन रीसेट करो वैल्यू। सेकंड ट्रायल के लिए सपोज मैंने वाटर टेम्परेचर ले लिया 83 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग टेम्परेचर मैंने ले लिया 26 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ डिस्क ले लिया 6.9 ग्राम, रेडियस ऑफ डिस्क 2.1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने ऐसा किया because I can visualize the internal structure. Okay, now I will click on power on. Just see. Okay, now we have achieved a steady state. So T1 is 83. You can see T2 is also 83. T3 is also 83. Equal to water temperature, we have achieved steady state. Initially, T4 will be equal to surrounding temperature. That means it is 26. Okay, 26 degrees Celsius. Now we'll fit the disk. As soon as I will fit the disk, so temperature rise will take place. And with respect to time, so I have to record the temperature rise with respect to time with till we achieve steady state. So we'll be able to generate graph for temperature with respect to time, and we can find the slope for the graph, that is rate of change of time, rate of change of temperature with respect to time. Let's see. With the disk. Okay, the temperature rise uh, is taking place. Okay, with respect to time. Okay, so temperature stop. Okay, 81.56. Fine. So we have achieved steady state 81.5. That's it. So take okay, simulation is over. So you take the screenshot, copy the screenshot, and paste it at the required place in our Word file template. Now we'll click on reset. For third trial, we'll take again. Suppose this time I've taken the water temperature as 69. Okay, suppose 71 degrees Celsius. Surrounding temperature this time I've taken as 29 degrees Celsius. Mass of disk is I've taken 8 grams. Radius I've taken as 3.7 centimeters. So cross section. Now power on. Okay, so now we have achieved a steady state at a different location of the hemisphere. So T1 71, T2 71, T3 71, T4 is equal to the surrounding temperature 29. I'll fit the disk. Take this. Just observe this. Temperature is taking place with respect to time. Okay, stop changing. Okay, 68.10. So okay, we have achieved this. So take the screenshot. 68.1. Okay, now we can calculate the slope of this curve. Okay, that's it. Okay, now let's see how to calculate this one. Okay, so एक बार और करके देखते हैं। सपोज जो हमने क्या लिए थे 62, अभी देखते हैं एनालिटिकल के लिए कैसे करेंगे। 62 सपोज मैंने लिया 71 डिग्री 70, this time 80 degree Celsius I have taken. Surrounding temperature suppose I have taken as 33 degree Celsius, 32 degrees. चलो इस बार मैंने 34 डिग्री सेल्सियस ले लिया। मास ऑफ डिस्क 7.5 ग्राम्स ले लिया। रेडियस ऑफ डिस्क 2.3 सेंटीमीटर ले लिया। सो क्रॉस सेक्शन पावर ऑन देखो 71। नाउ पावर ऑन पे क्लिक करो 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये आ गया देखो स्टडी स्टेट रीच्ड। T2 भी 80 है, T3 भी 80 है, T4 सराउंडिंग टेम्परेचर T 34। फिट द डिस्क कीजिए, यू जस्ट सी टेम्परेचर राइज टेक्स प्लेस। Okay, we have achieved steady state. Okay, done. So now we'll see the temperature value. It was 80 degrees Celsius. 80. So Kelvin में हमें करना है, तो 273 plus 80. Just give me a minute. I will write the values in Kelvin.
Write the value. 353 हाँ 80 plus 273 353. 353 Okay, T2 is also 353. T3 is also 353. Average value 353. Okay. Now अपना डिस्क का टेम्परेचर क्या था? हमने टेम्परेचर कितना दिया था? ये तो स्टडी स्टेट का वैल्यू है। स्टार्टिंग में हमने 34 डिग्री सेल्सियस दिया था। 34 प्लस 273. ओके 34 प्लस 273 307 केल्विन में देना है। ओके अभी देखो टाइम टाइम टोटल कितना लगा है स्टडी स्टेट में आने में और स्टडी स्टेट टेम्परेचर कितना है। तो टाइम अपने को टोटल देखना है कितना लगा है। टाइम इन सेकंड्स। स्टडी स्टेट टेम्परेचर वैल्यू क्या है? दिस इज 77.94. so 273 प्लस 77.94 350.94. ओके और टाइम आपको नोट डाउन करना 354.94. अभी टाइम पर आपको ध्यान देना है। टाइम कैसा है, टोटल कितना आया। ठीक है तो टाइम हमने देखो ये तो नॉन स्टॉप चलता जाता है। ओके तो जिस टाइम पर ये अचीव हो गया स्टडी स्टेट वो टाइम को हमको नोट डाउन कर लेना है। तो हमको प्रॉपर टाइम नोट डाउन करना है। एवरी आफ्टर 20 सेकंड यू नोट डाउन। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके करते जाओ क्योंकि बहुत जल्दी चेंज होता है। और जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर स्टॉप होता है वैसे ही आपको यहाँ का टाइम भी नोट डाउन करना है। चलो इसी वैल्यू के लिए एक बार फिर से देख देते हैं क्योंकि जिससे हमें टाइम का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। मैंने रीसेट किया। चलो मैंने क्या वैल्यू दिया था है ना 80 उसी के लिए कर लेते हैं। चलो 80 34 सराउंडिंग टेम्परेचर। ये मैंने कितना दिया था मास ऑफ दे चलो 67.6 ग्राम्स दिया सपोज। रेडियस ऑफ 2.6 दिया है क्रॉस सेक्शन। ओके अभी चलो मैंने पावर ऑन किया स्टडी स्टेट आ गया। ठीक है 80 80 80 यहाँ पे T4 कितना हो जाएगा 34। आई फिट द डिस्क। अभी ये देखना आपको एवरी आफ्टर 20 सेकंड नोट डाउन करना है टेम्परेचर वैल्यू। जैसे स्टडी स्टेट आएगा तो टोटल टाइम भी यहाँ पर कर देना है क्योंकि ये टाइम बढ़ता जाता है स्टडी स्टेट के बाद भी। तो बाद में आप नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। ओके so fit the disk. You just see टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके सो 2 मिनट 50 सेकंड्स। ओके 2 मिनट 50 सेकंड्स दैट्स इट। 2 मिनट 50 सेकंड। अभी देखो ऐसा अपने को करना है। यहाँ पे नोट डाउन कर लो। ये देखो ये हमने किया हुआ था है ना। तो अभी फर्स्ट ट्रायल के लिए आपका ये आ गया आपका। यहाँ पर मैंने वैल्यू किया हुआ देखो 80 80 80 है ना। तो अपना 3 स्टडी स्टेट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस कैल्विन में कन्वर्ट करके 353 350 350 एवरेज आ गया 353। डिस्क का हमने कितना लिया था 34 है ना। 34 प्लस 273 307। ओके टाइम 2 मिनट 50 सेकंड। तो टाइम इन सेकंड कितना हो गया 2 मिनट 50 सेकंड यानी कि 2 इंटू 60 120 प्लस 50 that is 170 seconds. Okay and steady state copper steady state temperature of this disk in Kelvin ये कितना है देख लेते हैं कितना आया था 79.64 है ना 79.64 यही दिख रहा है हमें है ना 79.64. so this value we have to note down here. So 79.64. So 79.64 plus 273. So 352.64. Okay. 352.64. ओके तो इस तरीके से आप ये टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके इस तरीके से आप इस टेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है टाइम का ये फाइन।
So my suggestion is you take the same values actually, क्योंकि थोड़ा आपका टेम्परेचर टाइम और टेम्परेचर का वैल्यू में कुछ अगर मिस्टेक हो रही है तो वो आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए 3 ट्रायल्स लिया है फॉर इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी पार्ट, और इनफैक्ट यू कैन टेक द डिफरेंट वैल्यूज आल्सो, नो इश्यूज। ओके, तो ट्रायल 1 में हमने देखो 80 डिग्री सेल्सियस ले लिया, 34 डिग्री सेल्सियस ले लिया ना, तो ये एवरेज वैल्यू, जस्ट फीड द वैल्यू, सो ऑटोमेटिकली एवरेज वैल्यू, एवरेज स्टेडी स्टेट टेम्परेचर वैल्यू ऑन द हेमिस्फीयर आ जाएगा, स्टडी स्टेट टेम्परेचर वैल्यू ऑन द डिस्क आ जाएगा, टोटल टाइम टू अचीव स्टडी स्टेट यू कैन नोट डाउन, एंड द स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द डिस्क ये आ जाएगा। सेकंड ट्रायल के लिए यू टेक सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, उससे यू फीड द वैल्यू, एंड थर्ड ट्रायल के लिए यू फीड द वैल्यू हियर फॉर द थर्ड ट्रायल, एंड फॉर each and every trial you calculate the Stefan Boltzmann constant, and finally you take the average Stefan Boltzmann constant, so this will be the average experimental value of Stefan Boltzmann constant. Okay, that we can calculate after feeding all these values in the mathematical expression. So this is the mathematical expression. Okay, and then compare your average experimental value of Stefan Boltzmann constant with the standard value. And we know the standard value of Stefan Boltzmann constant is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin to the power 4. Okay, so we have completed this. Okay, so now we have completed both the experiments. Fine. So now you complete these 2 experiments. Okay, so all the experiments are over. All the 10 experiments are over as far as our HMT lab is concerned. Okay, so you submit the remaining experiments in this coming week. Okay, just give me a minute.